Okay, I think now we can get the YouTube link. Hey, hi, ma'am. How are everybody? Hello, Priyanshi. I've just sent the YouTube meeting link, ma'am. Hello. Yeah, I think I could copy and paste it now. Perfect. That Great. Great. Thank you. How are you, Priyash? All good. All good. How is everybody? It's doing as well. How are you, ma'am? All good. Perfect. So we'll just wait for a certain time, and I think a lot of people are yet to join. So Yeah. do give me a heads up when to Hello, begin. everybody. Sure. Hello, Priyanshi. Hi, I've just sent the YouTube meeting link, ma'am. Hello, Thank you. everyone. I think I could copy and paste it now. Perfect. That Great. Great. Thank you. How are you, Priyash? All good. All good. How is everybody? It's doing as well. How are you, ma'am? All I good. think the YouTube link is on your side, right? There's a lag. Ma'am, YouTube link. Hi, Priyash. Have you shared the YouTube link? Got it? Yeah.
I think we can start. Priyash. Yeah, we've got 24 so far. Right. So once again, welcome everybody, and glad to see you on. This is on the 4th week. That means we've already been doing the session for a month, quite literally. So I mean, before we get on to today's activities, I just wanted to take a quick feedback as to where are we with all the past 3 weeks of work that we've discussed. How's the team faring? If there are any doubts, any questions, any struggles, any challenges, we can discuss them. And then, of course, I would also want to discuss the task that that was stipulated in the last week. So, ma'am, if you'd want to be going ahead. Yes. Hi, Priyash. Hi, everyone. Anyone can interject if I'm wrong. So basically, we've all been, at our own pace, trying to make videos, getting to know, because most of us, there's only a few of us who actually were doing this beforehand. So just learning to create content to get there. I have a little bit of a slower learning curve, I think, but there's lots of youngsters here who are doing very good. We have our Facebook page. We've got the Instagram, the bio, which we showed you, I think, last time. Yeah. We have a bunch of content buckets that Shalini had shared. We just have to tweak it a little bit to, I spoke with her about it to make it a little bit narrower and not include too much in it. Because that's the bottom line, right? Our target market shouldn't be too large, and our content, I guess the types of content shouldn't be too large, because then it's just everything there. So we're just going to narrow it down a bit. Okay. Yeah, that's it. We do have to come together and see each other's content though, and see what direction it should take. All right. All right. So when you say that, your Facebook page and Instagram account are ready, would you want to be sharing the links in the chat so that, we can all go through that once very quickly? And, in the last session, we'd also gone through about the main task was to create the content and schedule it for the month of the last days of Jan. All right. No worries. But what I would be looking at, because we have 4 more weeks, right? So 1 month literally today is done. And from now onwards, everything that we're doing, we would want it to be getting out there. So because by the time we complete the next 4 sessions, we would want to be in a situation to also reflect back on what we are already doing. So if there's anything that could be improved, if there's any challenges to be hum better kar sakte hain. So starting with the content creation, scheduling them. And today I also wanted to talk more about, I don't think we've gone through कि हम Instagram पे सही तरीके से story कैसे post कर रहे हैं या करना चाहिए, right? We will be talking about that. The next session will be spending primarily with reels. And today we'll, along with stories, कौन से अलग-अलग तरीके की हैं, we'll also talk about hashtags. कि whatever hashtags which is going to help us bring a larger reach, तो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे research करना चाहिए. That is going to be a primary activity today. But आज के session के बाद you all should be in a better position to create content and schedule it. तो हम I'll give you a very stipulated content scheduling कैलेंडर एज वेल कि मतलब एक दिन में कितने पोस्ट जाने चाहिए, कितनी रील्स जानी चाहिए, कितनी स्टोरीज जानी चाहिए. आई थिंक ये भी मैंने बताया हुआ था, बट विल रीइटरेट दैट कि हमें so that whatever content creation that is pending वो लाइन पर आ जाए, and then we are able to schedule it for the future. But any questions before we get on to today's activities? Not right now, but I think as we go along. I had some, but I'll bring them up. Yeah. Maybe if we can use Hindi in a better sense, because people are maximum from the north side, तो थोड़ा सा better होगा. I mean, just a request. अभी जब मेन सेशन शुरू होगा तो हम केवल हिंदी में ही बात करेंगे मनु जी, फॉर एवरीबॉडीज इंक्लूसिविटी एज वेल. इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है या कुछ कोशिश करी और जहाँ पे समझ में नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो हमारे टेम्पलेट्स रेडी हो गए फॉर द कंटेंट? Again, we've done different things, but tomorrow we'll be getting together to finalize that all. All right.
ठीक And है. then we'll do all the con. So this week we will have a schedule. So in the meanwhile, ma'am, could you share the Facebook page link in the chat? If Right, it's possible? I'm sharing with you, yeah. And If also, anyone has it handy, you can do it, or I'll just go to my. also, lovely ma'am, just a suggestion. If you could share the WIP templates that you would have, in this call, so that Priyash can give his feedback, and Okay. that can be incorporated in the call tomorrow when you guys are connecting. So if we could just have a, a pre-look at it, so that we can give, any suggestions if we have. Will do. Yeah, I think Great. that would make a lot of sense. कि आज हम, rather than doing a lot of new things, Yeah. we will of course be doing a lot of new things as well. हम stories कैसे post करनी है, hashtag strategy, but it would be a good time right now to reflect कि Yeah, हमने जो because किया हुआ है, so that Let we are me not just rushing with things. share our WhatsApp page with you, and then Do you want me to give you the access to share the screen? yeah, please. I have my WhatsApp on my desktop now. So. अच्छा, once again for everybody, अभी हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने 4 हफ्ते बिता दिए हैं साथ में, तो rather than कि हम कोई नई चीजें आज ज्यादा गहराई से सीखे, तो बेहतर ये रहेगा कि हमने जो पिछले 3-4 हफ्तों में सीखा है, समझा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख पाए कि क्या चीज हमने करी है, कहाँ चैलेंजेस आ रही है, क्या चीज पेंडिंग है, एंड देन ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ के चीजें देख पाएंगे कि हमें और क्या चीज करनी होगी. Right. So a few things. We were creating some content. Then I'm gonna show what Shalini has shown here. Mm-hmm. But just to let you know, you've seen our final logo, haven't you? I think in the last session we had finalized on it. Yeah. So basically, we were working. This is my own picture, but we were working on something like this for testimonial initially. So we've got the colors of our group. And then hold on, you can see it, right, as I'm going down. Yeah, and then I'll tell you which one exactly. So this was so something like this for just a general testimonial where a before and after doesn't need to go. And we all kind of like this one, the one with jumping high five. Yeah. And so after doing all this, what we were, Shalini had suggested that instead of doing the green, we can still do green backgrounds, but we can have more like something which like this. Hold on, coming. Something like this, where we have with more tinge white of background greens. Also, and do the different colors. Could you click on that and just open that image once, please? I think that should open up. Yeah. Oops, where did it go? What are you seeing right now? Hold on, it's just kind of vanished. Yeah, the vanished thing. So that was a good thing because when there's a white background, then you can do a lot more with including certain colors, and वो visually भी काफी ज़्यादा appealing लगता है. When we have a full green background, things can tend to become a little bit dull. Yeah. So we'll still have our colors. It somehow got stuck for me. I'll just go back to it. I think it just quit on me. So after that, then I did create like similar what I had done with the green. So I created with the light. So we'll work on that. Is that okay then? I think we go, and then in between we could probably have a little bit more color to break that monotony. Right, absolutely. So in your logo, there are basically 3 shades. What I saw, right? Yeah, actually our logo is just the one light green, something like what Shikha is sitting with, background. But then we've picked those like 3 shades for our colors. Yeah. So if we mix it up and with a specific white background, then चीजें जो हैं वो काफी उभर कर आएंगी. And good thing is, I mean, primarily, again, I think I've said this before and I'll repeat that again. Facebook, Instagram, whatever algorithm that they're running, they are very much focused कि जितनी चीज creatively बाहर सुंदर दिखेगी, right? Automatically they'll start pushing it more. So in fact, I mean, just out of I was attending this marriage on Sunday and I met a person who had worked with Facebook algorithm, ad algorithms previously, and he was saying exactly the same thing कि जो भी हम ads run करते हैं या जो भी हम post run करते हैं, the algorithm has been built in such a way कि जितना ज्यादा सुंदर होगा उसको automatically ज्यादा
push मिलेगा. So we'll have to really focus on putting things in a very creative and a beautiful manner such that it attracts the eye. And that's as simple as that कि अगर कोई चीज सुंदर दिख रही है तो हम feed में रुक के देखेंगे कि अरे ये क्या चीज है, right? हमारा attention span बढ़ेगा, and if we tend to spend more time on that platform तो algorithm हमें और ज्यादा reach पहुंचाएगी. तो when we are getting into content creations, everybody over here सबसे यही अनुरोध होगा कि आप जितना ज्यादा सुंदर दिखा सकते हैं चीजों को, and that is why templates are necessary. Because अगर फिक्स टेम्पलेट्स हो गए एंड देर ऑलरेडी विजुअली अपीलिंग, तो हमें बस टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा, इमेज में भी चेंज हो जाएगी, एंड इट विल स्टिल कम आउट बिकॉज यू विल हैव सो मेनी क्रिएटर्स. We do not want to be in a situation कि सब अलग अलग चीजें बनकर आए and half-heartedly चीजें जाएं. So that is why those templates and the kind of grid that you were showing, that was looking very nice in your mockups. So Abhi, I am still doubtful on how you create a template for a video, because it's just Video, don't worry about video for Yeah. templates primarily. For your Yeah. main images, for video, Yes. what would be required primarily is कि जो भी हम video बना रहे हैं, they should, irrespective of the template, but it should just have good editing, right? There should be a sequence to it, there should be good sound to it, and I can discuss certain parameters today as well कि जब हम videos की बात कर रहे हैं तो exactly वो उनमें कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है. I think I've gone through that once, but I will just reiterate. So let me just Yeah. note it down. I'll And let me just share this is our Facebook page. Yeah, so ये है हमारा, अगर आप color देखो, our logo, it's just the one uniform color. right. But then, so this is it so far. This is our Facebook page. And I'll just share, this link should be good enough, right? Because that's the main page. Your health community. I just think वो your health community पे जो your health आ रहा है, that could be a better color. If you use white, perfect है, वो अच्छे से आएगा. And so there's these images are significant enough. So खाने के लिए है, detox के लिए है, It's mental not, stress yeah, के we लिए. can change that also. Yeah. That's I mean, if you can look at a little bit of more options. Yeah. Otherwise, the Yeah. template and the way it is coming up is fine. Did We you could get even it? make a collage for the background. That's something that can. Is that something that we can change after, or it shouldn't change? Yeah, right? You can. And again, what I would advise is, because we're talking about community. So if you can have, a collage wherein you can see a lot of people collaboratively doing something together, it just gives a little bit of more sense of togetherness as a community. Absolutely. Yeah, so we will do that. We'll make we just need the right pictures to make the collage. Also for now, agar aap dekh rahe ho, there are 10 likes on this page and 20 followers. You should assign a task to all the 30, 40, 50 people who are a part of your community, that at least each one of them should bring 20 likes or 20 followers. बिल्कुल, and उससे ज़्यादा ही होंगे. Exactly. Except right now, since we haven't created any content, we haven't done that. So just keep that notice, both for Instagram as well as for Facebook. Yeah. Were you able to set up messenger automation on that? No, I haven't done that yet. Okay. Yeah. So wo bhi whenever So you I get a have to chance. change my WhatsApp first to a business account. In order to connect it to Facebook, but Facebook के अंदर भी जो messenger automation है, that FAQs, frequently asked questions, that is also something that you can add. Oh yeah, that we have. Sorry, we've done our first one. So I don't know if we tested it yet. Oh, I'm gonna have to open it again. So we do have that, yeah. All right. At least our first one, we have that, good to hear from you. In a message. Yeah. Okay. It's working. Okay. It's working. Great. And did you link it with Instagram? Your page? Sorry? Did you link the Facebook page with Instagram? Yeah, Shalini had already done that. Yeah. Perfect. So page में आपने basic branding कर ली है. You've connected it with Instagram. You're pending to connect it with WhatsApp. Now the only thing from a Facebook page and from an Instagram perspective would be कि content बनना start हो जाए and we start scheduling it, right? Even if you are not able to create a lot of content in bulk to begin with, at least give yourself and the team a target कि हर हफ्ते हम 5 images, कुछ stories,
ये सारी चीजें हम डालते रहें, so that now is the time to start looking at insights. I would really want to be in a situation कि जो हमारा last session हो ना, वहां पर हम Facebook page insights खोले, Instagram insights खोले और देखे कि अच्छा इतनी रीच आ गई, इतने एंगेजमेंट हो रहा है, एंड देन एवरीबडी विल फील मोटिवेटेड. अगर हमने इतने कम टाइम में ये चीज कर लिया है, देन इट्स जस्ट गोइंग टू बी रैंपिंग अप. ओके, So this week we'll definitely get into that. perfect. Any other questions, comments from anybody else as well, अगर किसी को पूछना हो अभी? All good? हरीश, आपने जो वीडियो वाला बताया था, वीडियो का टेम्पलेट नहीं होगा, पर उसमें लाइक उसमें किसी कलर का तो ऐसे वो तो बिकॉज हम लोग जब बनाते हैं 11.5 से, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा जो भी हमारे को मिलेगा, राइट? तो उसमें अगर आप अपना उसे चेंज लोगो करना चाहे तो कर सकते हैं. लुमेन 5 पर भी फिर रिमेंबर एट सेट कि वहां पे एक ब्रांडिंग का ऑप्शन आता है, आर ब्रांड कलर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको. आई एंड जस्ट लोगो अपना कैसे प्लेस करेंगे वहां पे, वो बाद एक, में होगा? वो आप बाद में भी कर सकते हैं. अगर आपको लुमेन 5 पे जैसे जो हमने जिस तरीके से बात करी थी उसको ऐसा फ्री अकाउंट यूज करने की बात करी है, राइट? इसीलिए वहां पर अभी आप डायरेक्टली अगर लोगो डालना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे. आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर कोई भी जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वीएन एडिटर हो गया, इन शॉर्ट्स हो गया, मोबाइल फोन में होते हैं, आप वहां से लोगो प्लेस कर पाते हैं. कैनवा लेकिन पे भी कर अगर सकते हैं हम लोग, कैनवा पे हाँ, भी कर सकते हैं कैनवा पे वीडियो। उस वीडियो को कैनवा पे अपलोड कर लीजिए और कैनवा पे अपलोड करने के बाद वहां पर आ जाता है, अगर आपको ये फ्री में यूज करना है. अगर आप चाहते हैं नहीं, वी कैन स्पेंड $10-12 पर मंथ ऑन दैट टूल, लुमेन 5 का सब्सक्रिप्शन इज अराउंड दैट मच, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यू विल डायरेक्टली बी एबल टू ऐड योर ब्रांडिंग कलर्स. लेट मी शो शो इट टू यू वेरी क्विकली. One second. राइट, तो अगर आप यहाँ देखिए मनोज जी एंड एवरीबॉडी, यहाँ ब्रांड किट्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो अगर आप ब्रांड किट्स पर जाते हैं, फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट अ ब्रांड किट, which basically means आपके and see it is asking for taking the full version of this particular software. So pricing options भी, if you want to be looking at it, you can see that if you look at monthly, then it is 29 USD per month, which is approximately 2000 rupees per month जैसा है. And in that case आप branding colors directly यहाँ से डाल सकते हैं. If I use the full version, I can just give the logo over here, और logo से related जितने भी colors हैं, तो हर एक वीडियो में अपने आप ही brand से related ही colors के साथ ही आपके पास चीजें आएंगी, राइट? अदरवाइज ये जो फ्री में हम वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें आप कैनवा पे अपलोड कर लीजिए. कैनवा पे अपलोड करके आप अपना लोगो, ट्रांसपेरेंट लोगो फाइल जो है, उसको आप हर एक स्लाइड पे प्लेस कर देंगे, इट विल जस्ट कीप ऑन कमिंग अप एवरीवेयर. तो वो फ्री एंड सिंपल तरीका है. उसमें सिर्फ एक ही चीज हो जाती है, दैट थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा जाएगा एक बार वीडियो क्रिएट करने के बाद, उसको जो बेसिक एडिटिंग आपको करनी है. So Priyash, question related to that, अगर हम लेते हैं पेड, so let's say मैं अपना Lumen 5 का THT ग्रुप का ही एक अकाउंट खोल के पेड ले लेती हूँ, राइट, एवरी मंथ. लेकिन अब बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका तो पेड वर्जन नहीं है. नहीं, तो आप क्या करेंगे उस केस में कि जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अपना अकाउंट बनाएंगे ऑन लुमेन 5, यू विल जस्ट शेयर इट विद द रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स, कि आपको जब भी लुमेन 5 पे काम करना है, ये रही लॉगिन आईडी, ये रहा पासवर्ड, एंड यू गेट इनटू इट. सो आई वुड सजेस्ट दैट आप एक जेनेरिक कम्युनिटी की ईमेल बना लीजिए, फॉर एग्जांपल THT@. That's all done already. हाँ, so just use that to create an account, and just whosoever is going to be in charge of creating content, you can just simply give in those login details. They will not have to create a brand new account on it. उसी पर ही everybody will be able to work. ठीक है. Right? Yeah. Cool. That makes And sense. same thing goes for Canva as well. If at all, yeah, for any other tool that you might end up utilizing, you don't need to buy multiple user license. Right? If at all you do end up buying certain tools, you can just have one license और आप उसी को ही circulate कर दें in the team. You just have to ensure कि not many people are utilizing it simultaneously at the same time. Yeah. Right? Just take care of that. Then it's going to be fine.
Okay. I see Rakesh sir, आपका hand raised है. You have a question? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी. Good evening. प्रियश, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे अभी आप एक बात कर रहे थे रीच की पोस्ट के ऊपर, दो इसे वेरी स्मॉल प्राइमरी क्वेश्चन. जैसे मैंने शाम को एक पोस्ट किया अपना, वेडनेसडे का कुछ किया, तो मेरी जैसे पोस्ट पे पंजाब पोस्ट रीच 242, इंप्रेशन 243. व्हाट इज दैट लाइक? है ना. So reach and impressions आप कह लीजिए एक कॉइन के दो पहलू हैं. रीच मतलब कितने इंडिविजुअल लोगों के सामने आपका कंटेंट गया, राइट? कितने इंडिविजुअल लोगों ने आपका कंटेंट देखा, दैट इज रीच. तो अगर वो कह रहा है कि रीच इज 242, यानी 242 लोगों ने 242 इंडिविजुअल लोगों ने आपका कंटेंट देखा है. इंप्रेशंस क्या होता है कि whenever 50% ऑफ योर कंटेंट इज व्यूड फॉर 1 सेकेंड, मतलब आपका ऐसे पोस्ट किसी ने स्क्रॉल किया, 50% पोस्ट देख लिया, दैट इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्रेशन. अब एक बंदे के सामने आपका जो पोस्ट है वो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है. तो उसमें क्या होगा, वो रीच, तो फॉर एग्जाम्पल प्रियश हैज सीन योर पोस्ट 4 times, तो रीच तो एक ही है लेकिन इम्प्रेशंस 4 हो गए, राइट? अगर प्रियश एंड मनोज जी हैव सीन योर कंटेंट 4 times ईच, तो टोटल इम्प्रेशंस तो 8 हो गए लेकिन रीच आपकी 2 हुई. ओके, मेक सेंस? राइट. जैसे उन्होंने बोला कि जो मेरा वीडियो था वो 3 सेकंड का था, तो 117 वॉच, 117 लोगों ने उसको देखा. एग्जैक्टली. अगर वो रीच अगर आपको 117 दिखा रहा है, अगर क्या दिखा रहा है आपको, वीडियो व्यूज 3 सेकेंड्स, है ना? तो यानी कितने लोग, अब 242 लोगों के सामने आपका वीडियो आया, उसमें से 117 जनों ने पूरा 3 सेकंड तक वीडियो देखा. ओके, कूल. राइट. वो उस तरीके से आ जाती चीजें. राइट. थैंक यू प्रियंश, थैंक यू सो मच. नो वरीज. प्रियश, एक और क्वेश्चन. तो जब मैं ये वीडियो वगैरह बना रही थी, मैंने रियलाइज किया मेरे पर्सनली के लिए इट्स इजियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू जस्ट मेक अ पर्सनल वीडियो अबाउट whatever I want to talk about. And then we can make that and then edit with like some writing text वगैरह और फिर post कर सकते हैं. Absolutely. There's no problem around that. So there are certain very specific guidelines when it comes to creating videos for your social media. I'll just write it down for all of you. Whether you're recording, whether you are typing. Now, what is the benefit of Lumen 5 is that it takes your, makes things very quick for you. You don't have to spend too much time ideating. And now there is chat gpt. I think मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि chat gpt पे if you just go ahead and give certain prompts, you'll get very quick answers, and उसको आप convert कर सकते हैं into video with Lumen 5. But ideally, see the kind of videos, and we're only talking about regular feed videos. अगर हम Instagram या Facebook की बात करें videos की, तो there are 2 kinds of videos that go out there. एक तो feed पर जाते हैं, राइट, जो रेगुलर पोस्ट की तरीके से आप अपलोड करते हैं, एंड दूसरा जाता है रील फॉर्मेट में. तो रील तो थोड़ा सा डिफरेंट ही हो गया, उसके बारे में वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन कि रील्स को कैसे बनाना चाहिए एंड एक्सेट्रा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फीड वीडियोस, जो आप रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, पहली चीज, आइदर दे शुड बी इन 1:1 रेशियो, राइट, और दे शुड बी इन 4:5 रेशियो, राइट. 1:1 यानी स्क्वायर इमेज, स्क्वायर वीडियो, and 4:5 यानी एक पोर्ट्रेट में हो. So whenever you are recording a video on your mobile phone, तो उसमें जो portrait mode है, try selecting portrait mode and then record that video, because that is meant for Instagram placement and Facebook placement, and it is very good for mobile phone optimization. यानी mobile phone पे ज्यादा से ज्यादा area cover करेगा आपका video. That's number 1. So we say, always create video optimized for mobile. In terms of size, so if you remember Lumen 5 में भी I was telling you कि अगर आप Facebook या Instagram के लिए feed videos बना रहे हैं तो वहाँ पे 1:1 select करो. अगर reels बना रहे हैं, stories बना रहे हैं तो 9:16, and अगर थोड़े से और engaging videos बना रहे हैं तो 4:5 वहाँ पे ratio आता है. So it should be optimized for mobile size. That is number 1. Number 2, very important thing is, majority of the people watch videos on Instagram और Facebook जब भी वो देख रहे होते हैं या खुला होता है, तो by default सारे videos mute पर होते हैं.
If you would notice by yourself, अभी अगर आप भी जाएंगे तो majority of the videos are on mute जब तक कि आप उसे tap ना करें and you don't want to hear. That means again जो भी videos हम बना रहे हैं they should be optimized for sound off. इसका क्या मतलब हुआ? या तो आप लूमिन 5 के तरीके से वीडियो जा रहे हैं उसमें वॉइस ओवर नहीं है एंड कैप्शन सामने आने चाहिए कि इस वीडियो का मेन मकसद क्या क्या कहना चाह रहा है. या फिर अगर आप इन केस यू आर रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल यू वांट दैट मैं खुद रिकॉर्ड करके बोलूं, इन दैट केस आल्सो यू विल हैव टू एंश्योर दैट सब टाइटल्स की तरीके से चीजें जाएं. Because if people are not listening to that video by any chance, अगर mute पे है, just by reading, just by knowing कि ये video का title क्या है और ये मैम क्या कह रही हैं, they should still be able to capture the message and you will be able to capture the attention. So अगर आप वैसे videos बना रहे हैं, just ensure subtitles are there and there is enough captions coming up. नंबर 3 चीज ये है कि अगर आप अगेन फॉर फीड वीडियोस बना रहे हैं हम, तो उनकी जो ड्यूरेशन है एंश्योर कि वो 15 to 20 सेकेंड्स हो, इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा में क्या होता है, लोग फिर इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, एंगेजमेंट कम हो जाता है. तो अगर एंड द स्वीट स्पॉट इज 15 सेकेंड्स एंड दैट इज डायरेक्टली ये इंस्टाग्राम फेसबुक एल्गोरिथम बोलता है हमें कि भाई तुम 15 सेकंड तक बनाने की कोशिश करो. उसमें भी फर्स्ट 5 सेकंड्स में आपने कुछ हुक दे दिया दैट व्हाट आर यू गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. I mean, a very simple structure could be you are talking, आपने immediately pain point बोल दिया that are you tired of being unhealthy or being having a very lethargic life, for example. अब एकदम spot पे डालना, then you are talking about the need for them and then you are talking about the solution. So this could be, let's say, 2 to 3 seconds. This could be for 5 to 6 seconds and then this could be the remaining. तो ये another 5 to 6 seconds हो गया. For example, again, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो काम से और क्या इसके चलते आपकी मानसिक और फिजिकल हेल्थ खराब चल रही है, तो आपको जरूरत है अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स करने की. और डिटॉक्स करने का सही तरीका है सुबह 5 मिनट मेडिटेट करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, तो वो सोल्यूशन आ गया. एंड विद इन 15 seconds इट इज गोइंग आउट with some, if not if there is a voiceover, if you're giving a voiceover then it should be with captions. If it is not going with a voiceover then तो definitely captions होने ही चाहिए and some background music, right? So maybe a very stupid question. What exactly do you mean voice over? Voiceover Is as in when you are dictating, when you are saying things, right? right? For Right. example, on Lumen 5 as well, if I am recording, did I show you that there's an option to record a voiceover over there? I don't recall. Let me quickly show you so this will become much more clear to you. Let's suppose I'm going to be creating a video here. One second. ये क्या हो गया? Sometimes it just hangs. Right. Cool. So let's say I'm just taking any random template as of now. And again, remember this 1:1 for your feed videos, right? 9:16 for your reels or stories or your longer formats. Abhi 1:1 कर लेते हैं. And very quickly, let's go on ChatGPT. Or maybe let's say if you're saying that you really like to speak without putting up any script, so you can articulate your script over here as well. For example, are you tired of being lethargic, which is a rhetoric question in itself, but and low on energy. So you can pretty much type out what you Yeah. want to speak. Do you want to feel energetic and start your day with freshness? Sorry. Follow this routine. Follow this early morning routine.
which could be number one, 5 minutes meditation, at least 15 minutes high intensity workout, and third could be take a good cold shower. Yeah, I'll convert to video. It will become a very small short video, but what I can then do is to add a little bit of more personalization, I can record a voiceover. If you see over here, there's this option, right? See, by the way, the video has come up over here, right? And I can simply go ahead, record a voiceover. So are you tired of being lethargic and low on energy every day? Do you want to feel energetic and start your day with a fresh mindset? Follow this 3 tips in your morning to have a better life, blah, blah, blah. 5 minutes meditation is your first thing to rejuvenate your mind. Go on a 15 minutes high intensity workout. You get my point, and you can add an entire voiceover. Now see what was happening over here. कुछ slides लंबी जा रही थी and my voice, मतलब मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम था. So in that case, what I can do is, if you see right hand side पे there was the second duration कि first slide 4 seconds है, second slide 5 seconds है. आप उनकी duration कम कर दीजिए so that you can map it out accordingly. So once this is done, this will come out with your voice and whatever music that you would want to be adding. So captions भी आ गए, proper videos भी आ गए, voice भी आ गई आपकी, and it is then going to be properly optimized for both Instagram as well as Facebook, right? So look at this. Wonderful, very clear. Yeah. Sorry, were you able to hear this? Yes, yes. What is this caption? Caption क्या होता है? जो ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे. Okay. This is the subtitles कह लीजिए, captions कह लीजिए. Now if you watch this. On energy every day. Do you want to feel energetic and start your day with a fresh mindset? Follow this 3 tips in your morning to have a better life, blah, blah, blah. 5 minutes meditation is your first thing to rejuvenate your mind. And what was good was कि अगर जो background music भी आप सुनो, that was very mild, mellow, nice and going with the voice. So ये अगर आप ऐसे बना रहे हैं ना, this video will give a little bit of a touch of more personalization. So if there are people who are going to be listening to your video with without mute, with sound on, then they will be much more able to connect with you. और अगर नहीं करते हैं तब भी these tips are something which are in front of them. They don't necessarily need to hear you and they'll still get the entire crux. पूरी की पूरी information उन्हें मिल जाएगी, right? So it picks the audio automatically. Yeah, it picked the music and automatically. We can change if we want. We can change. So यहाँ पे you have the music option. So currently it automatically selected one, singularity, elevating. ये अपने आप select कर लिया उसने. Yeah, this one. It selected it automatically. But if you want to change, you can change it. So second question, जब हम इसको अपने Instagram पे लेके जाते हैं, तो तब कोई म्यूजिक का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होएगा? नहीं, फॉर वहां पे आपको इंस्टाग्राम पे कोई म्यूजिक डालने की जरूरत ही नहीं है. एंड प्लस अगर आप जो भी म्यूजिक यहाँ से ले रहे हैं, दीज आर ऑल कॉपीराइट फ्री, तो वहां पे कोई इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं होगी एंड यू एनी व्हिच वेज बी एबल टू गो डाउन. बट रिमेंबर दिस इज प्योरली फॉर योर फीड वीडियोस. अगर आप म्यूजिक ले रहे हैं फ्रॉम हियर, जो रेगुलर आप अपलोड करेंगे ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये उन वीडियोस के लिए म्यूजिक है. रील्स के लिए वी विल नॉट चूज एक्सटर्नल म्यूजिक. Reels के when we'll upload reels, we will be choosing music from Instagram itself, because वहां पे जो म्यूजिक होता है they follow a specific trend. जो ज्यादा ट्रेंडिंग म्यूजिक होगा उससे आपकी रीच ज्यादा बढ़ेगी. बट फॉर योर रेगुलर वीडियोस यू कैन मेक यूज ऑफ Lumen 5 to capture the right kind of sounds etc. And if at any point of time you would want कि मेरी जो आवाज है वो ज्यादा होनी चाहिए, म्यूजिक की वॉल्यूम कम होनी चाहिए, that can also be edited from here itself, right? You'll have those options. Look at that, background music को बढ़ा दें sound में, so there will be more background music, less of my voiceover. But if I usually prefer कि 20% या 20 पे background music हो, rest should be my voice, so that music भी आ रहा है, voice भी सुनाई दे रही है, right? So जो वीडियो हम यहाँ पे बना लेते हैं Lumen पे, वो फिर directly it will be as is on Insta, or can we change it?
Change as in? That's when we'll have to change the music. Let's say हमने reel बनाई यहाँ से Lumen से, फिर जब हम उसको पहले तो डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टा पे अपलोड करेंगे, करेक्ट? राइट, तो अगर हम रील बना रहे हैं, चेंजेस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और रील अगर हम बना रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, it will by default give me a music option, right? But what I will do is I'll get rid of that music so that it comes only with my voiceover. Okay. Right? तो यहाँ से मैंने हटा दिया, वो जो म्यूजिक था वो मैंने हटा दिया, अब ये बिना म्यूजिक का बिना म्यूजिक के आएगा. If you look at the preview of this. So are you tired of being lethargic and low on energy every day? Right? So there was only my voice, no music. इसको जब आप अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे, देन ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ यू विल फाइंड द ऑप्शंस टू ऐड ऑडियो. तो हमें इंस्टाग्राम के ऑडियोज को यूज करना है. नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा नेक्स्ट वेंसडे, हम 2 घंटे केवल रील्स पर ही डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैसे एडिट करना है, कैसे बनाना है, क्या टेम्पलेट्स है, म्यूजिक कैसे डालनी है. सो दैट विल बिकम मच मोर क्लियर, राइट? बट हाँ, गुड थिंग इज कि लूमेन 5 पर आप एक ही वीडियो को फीड के लिए भी डाल सकते हैं और उसको रीपर्पस भी कर पाएंगे फॉर reels as well, just by changing the format. अभी 1:1 का वीडियो बनाया था हमने, and I immediately changed it to 9:16 to reel format या story. This kind of video will also be very good for your stories. So जैसे आपने बोला फीड वीडियो चाहे हम पोर्ट्रेट में बनाए चाहे स्क्वायर में, what is the advantage of one over the other? Why not just pick one? So square is like a universal placement. चाहे वो उसे डेस्कटॉप पर देखेंगे लोग, चाहे वो टैबलेट में देखेंगे, चाहे वो मोबाइल फोन पे देखेंगे, इट इज गोइंग टू कम अप नाइसली ओवर देयर. बट जो 4:5 पोर्ट्रेट है, दैट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड साइज एंड स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस, राइट? क्योंकि मोबाइल डिवाइस पे जब पोर्ट्रेट मोड आता है, देन द पर्सन इज नॉट लुकिंग अप और लुकिंग डाउन, उनका पूरा अटेंशन विल बी ऑन योर वीडियो और योर इमेज. इफ यू लुक एट 1:1 और स्क्वायर, उसमें थोड़ा सा ऊपर का भी दिखेगा, किसी का पोस्ट थोड़ा नीचे का भी दिखेगा, तो अटेंशन इज diverted here and there with 1:1. but it is easiest to create. That's why we say कि अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें बनानी है, स्केड्यूल करना है, पोस्ट करना है, तो आप 1:1 पे जाएं. बट अगर आपको एक्चुअली क्वालिटी देनी है, you want your content to be optimized for the platform, more specifically for Instagram, because Instagram is mobile first, right? Nobody goes on Instagram with a desktop or a laptop. So primarily Instagram के लिए हम 4:5 choose करते हैं. Facebook के लिए you can go with 1:1. So but अगर Facebook के लिए भी यही रख लें format, absolutely perfect. That's in fact going to be the best thing. If you choose 4:5 across both the platforms, that's going to be the best thing, because Facebook पर भी majority of the people are using the Facebook app right now rather than going on facebook.com from their desktop or their laptop. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. प्रयास, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मे बी सिली आल्सो. फीड वीडियो और रील में आपने क्या डिफरेंस है, अगर मैं समझना चाहूँ? Sorry? फीड और वीडियो में डिफरेंस feed is this. रील और वीडियो में शायद फीड एंड रील दोनों में क्या डिफरेंस है? So feed क्या होती है? एक सेकेंड. अगर मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, like I've just come up over here, ये क्या हो रहा है? राइट, सो अगर मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ फ्रॉम माई मोबाइल फोन इटसेल्फ, ये मुझे दिख रहा है, दिस इज माई इंस्टाग्राम फीड, राइट? आई एम स्क्रोलिंग एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम फीड. तो हम कोई भी नॉर्मल वीडियो अपलोड करते हैं, राइट, एज अ क्रिएटर और एज एन इंस्टाग्राम अकाउंट, जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पोस्ट, राइट, और दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट, दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ये अपलोड किया गया था डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम एज अ बेसिक कंटेंट, राइट? तो ये फीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. फीड यानी लोगों जब भी वो जाएंगे, जैसे फेसबुक पर वॉल होती है, फेसबुक वॉल या इंस्टाग्राम ये फीड है, यू आर सिंपली स्क्रोलिंग ओवर हियर, राइट? रील्स के लिए लोग स्पेसिफिकली रील्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं. अगर उन्हें रील कंटेंट देखना होता है तो वो रील्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर उनको दुनिया भर की रील्स दिखाई दी जाती है. तो जब हम रील्स पर जा रहे हैं तो इनका फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है. इनके वीडियोस को अगर आप देखेंगे, देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशंस व्हिच आर कमिंग अप ओवर हियर. एंड अगर आप नॉर्मल, हम जो बेसिक फीड पर जा रहे हैं, तो जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है वो जनरली 1:1 फॉर्मेट में है या 4:5 फॉर्मेट में है, राइट? एंड दिस इज ओनली फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फीड, कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं
उन तक मेरा कंटेंट पहुंच जाए, वो लगातार मुझे देखते रहें जब भी वो अपनी फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन जब हमें अपने नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, रीच बढ़ानी है, तब हम रील्स का फोकस करते हैं, और वहां पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका डालने का तरीका, उसका यूज करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई इसमें। एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस? अच्छा, एक मैंने YouTube पे कई बार देखा है कि बंदा सामने से बोलता रहता है, स्केचेस से कुछ वो ड्रा करता रहता है, मीन्स दे स्टार्ट ऑडियो रहता है वो, एंड देन वो कुछ कैरेक्टर्स ड्रा राइट होते रहते हैं। राइट राइट। तो दैट इज अनदर टूल। वो लेकिन काफी महंगे टूल्स आ जाते हैं, जैसे रेंडर फॉरेस्ट है। इफ यू वांट मी टू शो यू, आई कैन शो यू वन राइट नाउ, प्रोवाइडेड इफ एवरीबॉडी वांट्स टू सी एक्सप्लेनर वीडियोस, जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आते हैं, राइट? सो अगेन दैट इज अ टूल कॉल्ड रेंडर फॉरेस्ट। इसकी भी प्राइसिंग है, एंड इस तरीके के एनिमेटेड वीडियोस अगर बनाने, दिस इज नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव। यू सी 799 रुपीज पर मंथ का जो लाइट वर्जन है, एंड इसमें हम किस तरीके के वीडियोस बना सकते हैं, इफ यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एनिमेशंस, राइट? यहाँ पे ये देखिए कैरेक्टर वीडियोस आ जाते हैं। इफ यू वांट टू बी पुटिंग अप कार्टूनिश कैरेक्टर्स, और यू वांट टू बी क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ ट्रेंडी एक्सप्लेनर टूलकिट्स, ऐसे आ रहे हैं, या व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस। So if I create this one trendy explainer toolkit kind of video, right? Again, यहाँ पर भी चीजें बहुत simple ही हैं. It's not that very difficult. I can simply, let's suppose, choose different kinds of templates from here. जिस भी आपको template को use करना, I can search for, let's say, fitness, right? ये fitness के अलग अलग तरीके के templates हैं, and all you will have to do is, change the characters. ये लेकिन पेड वर्जन में ही आएगा। व्हाइट बोर्ड वाला आपको दिखा देता हूँ, दैट शुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, दिस काइंड ऑफ वन। Right, so here also I can type my story just like I'd done it on Lumen 5. Again, for example, 3 tips to make your morning better. Number 1, meditate at least for 10 minutes. Don't drink coffee. Drink warm water. Exercise for 15 minutes. The funny thing is, I'm giving this gyan right now, and none of this thing that I follow. That's the problem with majority of the people, right? I think that is also a very important point of your target audience. इन लोगों को पता सब कुछ है, आता सब कुछ है, but there is this some kind of an inertia which they're not able to break, and that is where a community comes into picture when they are pushing each other together. And if you can position yourself like that, अगर आप अपने आप को दिखा पाए कि तुम ज्ञान सर्व ज्ञान दाता हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन जो आलस है ना, या procrastination कह लो, या breaking the inertia, that needs to go out. Anyway, so यहाँ पे I've just given these 4 points over here. If I click on generate project, what will happen is, Manoj ji, it will create, oh, I can only create 1 minute tak ka. Let me just reduce this. Again, I've already used it beyond 1 minute to create video in this month. नहीं, चलो, thank God. Right. So again, you can incorporate your styles. आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए, मतलब बोर्ड ड्रॉन चाहिए, या फिर ऐसे कट पेपर जैसा आ रहा है कि कैरेक्टर आ गया फिर हटा दिया, इस तरीके से। I'll choose this one right now. Color, you want to bring it with your font color, a brand color, you can change it. Let's suppose हम ये green करना है for just an example. Music add करना है, again you can choose whatever music that you want. ये add कर देते हैं. And then if I look at the preview right now, right, it will take some time, but you will be able to see कि जो भी हमने text लिखा है वो एक पूरा whiteboard animation पर आ जाएगा.
and then you will be able to, you can possibly use this tool as well. But I would not suggest आप ये करें, because आपकी ब्रांड पोजिशनिंग डाइल्यूट हो जाएगी. ये थोड़े से मुझे किडिश नजर आ जाते हैं, या फिर अगर टारगेट ऑडियंस एक यंगर चिल्ड्रन टारगेट ऑडियंस है तो उनके लिए ठीक है, या फिर एकदम ही ओल्डर टारगेट ऑडियंस है उनके लिए ठीक है. बट जिन टारगेट ऑडियंस के पास आप पहुंचना चाह रहे हैं, जो मिलेनियल्स एंड जेनजी का कॉम्बिनेशन है, they would want to be seeing much more visual, high quality, HD level kind of content, right? Although ये भी अगर आपको quickly content create करना है, you can do that. So you'll just see how it comes up. One second. But I hope with so many tools आप लोग overwhelmed तो नहीं हो रहे हो ना? Are you? What I would suggest is, write down कौन सा tool किस काम के लिए है. Create a inventory of tools. Lumen 5 इस चीज के लिए, Render Forest इसके लिए, Canva इस चीज के लिए. Let's suppose अभी आप hashtag tools देखेंगे, तो एक inventory आपके पास होनी चाहिए. Name of the tool, what is it going to be used for, and how frequently it will be used. And अगर आप उसके paid plan ले रहे हैं तो उसका जो भी login details है, it should be just in one single file. Now see this, for example, ये आपका वीडियो बन गया. So this is quite intelligent in itself as well. उसको warm water दे गया तो glass दिखा दिया. So if you do want to use it, but just ensure कि it's not diluting your brand positioning. Okay, cool. So coming back to over here, optimize for mobile phones in terms of sizes. I hope that is clear what you guys need to be doing. Just to make things absolutely simple, just focus on 4:5. Right, that means your portrait mode. Then when it comes to अगर आप कोई वॉइस ओवर दे रहे हैं, या अगर आप खुद अपना चेहरा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं while you are speaking, ensure कि उसके साथ सबटाइटल्स या कैप्शंस जा रहे हैं, so that they're optimized for sound off. फीड के लिए वीडियोस बन रहे हैं यहाँ पे प्राइमरली, तो 15 सेकंड से ज्यादा के ना हो तो बेहतर. एंड यू कैन जस्ट सेगमेंट देम, पहले 2-3 सेकंड पेन पॉइंट्स, फिर नीड्स, फिर सॉल्यूशंस. चौथी चीज जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, do not one very common problem that content creators have या video creators के पास आ जाते हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए मैं दे. प्लीज डोंट डू इट. वन सिंगल मैसेज या वन सिंगल टॉपिक, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त और स्पष्ट, राइट, टू द पॉइंट एंड एब्सोल्युटली सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको प्लीज डू नॉट मिक्स इट अप विद एनी अदर कंसेप्ट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेसिपीज, डू नॉट मिक्स इट अप विद एनी अदर कंसेप्ट. एक ही थॉट को ही लेके हमें बोलना है, एंड विथ अ कॉल टू एक्शन. हर एक वीडियो के एंड में हमें लोगों को बताना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, आप लोगों को बहुत ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए ऑन योर कम्युनिटी, ऑन योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. यू नीड अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट. सो यू कैन से आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, कमेंट्स में डालें, या फिर लाइक दिस पोस्ट इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, या फॉलो अस नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन, या फिर send this post to somebody who requires it the most. ऐसे कॉल टू एक्शंस होना जरूरी. लेट मी जस्ट लिस्ट इट डाउन सो दैट यू कैन कंटिन्यूअसली डू इट, नॉट ओनली जस्ट ऑन योर वीडियोस, बट आपके जो इमेजेस हैं, कैप्शंस भी हैं. सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 वुड बी कमेंट बिलो योर रूटीन या योर व्यूज. इस तरीके से कमेंट बिलो वाला कॉल टू एक्शन आ गया, राइट. या फिर आ गया like this post if you want more such content. इस तरीके से like वाला आ गया. Then you can say send
this to someone who requires this the most, right? इस तरीके से you can go ahead and keep on adding things. So call to action is absolutely required in this case. Make sense? So these 5 points are very much important. Optimize for feed, optimize for sound off, feed videos डाल रहे हैं 15 seconds, single message with specific call to actions. ये आपके हर एक वीडियो का व्यू पॉइंट होना चाहिए. Any questions? Anyone? Just 1 second. No, that's good, Priyash. It makes sense. Gives us a little bit more clarity. I think Rakesh ji has a question. He had his Yes, hand. go ahead. हाँ जी, थैंक यू लवली. जो अपने रेंडर फोर्स्ट पे अभी एक वीडियो बना रहे थे एनिमेटेड, उसको हम फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं? दैट वीडियो इफ वी Absolutely. मेक वन. आप उसे फेसबुक पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, यूट्यूब पर डालिए, जहां जहां पे भी. एक बार वीडियो आपके पास आ गया, डाउनलोड हो गया, देन उसको आप कैसे कहाँ कहाँ भेजना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. दैट्स ग्रेट. थैंक यू प्रियांश. थैंक यू. ऑलराइट. एंड बाय द वे द सेम काइंड ऑफ, इसमें ये जो वीडियो की गाइडलाइंस है, व्हेन वी टॉक अबाउट इवन आवर इमेजेस, राइट, when we talk about those single images, images भी दो तरीके की हो जाती हैं. One is your single image, right, and the other जिसको हम कहते हैं carousals, right? For example, let me see if I can show you a carousel example. अब जैसे ये है, this is a single image post, right? This one over here is a carousel. दो images हैं, जैसे पहला एक image आया और आप scroll करो दूसरी image आ गई, right? Again, if you go further down, this is a single image post, how to feel better instantly. And if you notice, this is in 4:5 format. When I am looking at this post, मुझे ऊपर नीचे का कुछ नहीं दिख रहा, even if I'm looking at on a desktop device. This is a single image, right? This over here is an example of a carousel. पहली image, 8 must-have Excel skills everyone should know. Then that is a attention capturing image होगी. Then you keep on scrolling. अच्छा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, how to import a PDF, then you keep scrolling. So these are the two kind of images. इसमें भी there are certain guidelines that you need to keep in mind. First guideline is again 4:5 में ही बनाइए इन्हें भी, right? Ensure कि आपकी images भी 4:5 format में ही जा रही हैं. But अगर हम single images की बात कर रहे हैं, single image पर please have least amount of text. राइट, यानी कि मैक्सिमम विजुअल्स आने चाहिए. जो आपकी इमेज है उस पर मैक्सिमम विजुअल्स आना चाहिए एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. दैट्स नंबर 1 in terms of creating your particular single images, right? Once again, मान लीजिए this is somebody exercising, right, and a very small text about let's say 5 crunches a day keeps your fat stomach away, just like that, right? So that वो हो गया. अब इसमें भी जब आप मैसेजिंग लिख रहे हैं, सिंगल थॉट, ओके, कोई भी ज्यादा आपको अलग अलग थॉट्स के बारे में नहीं रखना है. एक जो सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है उसी पर फोकस करना है. ये आपका सिंगल इमेज हो गया. Now, when you are adding testimonials, of course, उसमें थोड़ा text ज़्यादा होगा, which is still fine. But majority, if I'm posting, let's say 5 images per week, right? 5 feed images per week, उसमें से 4 out of 5 should be majorly visuals. Because उसी को देख के लोग ज़्यादा attract होते हैं, रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. फिर बात आ जाती है carousels की. That is this kind of an example कि एक इमेज, फिर सेकंड इमेज, फिर थर्ड इमेज, फिर फोर्थ इमेज, ऐसे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं. अब कोई स्क्रॉल क्यों करेगा? वो स्क्रॉल तब करेगा जब उसे एडिशनल गहराई में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो इन अ कैराउजल यू कैन ऐड अप टू 10 इमेजेस. सो 1 2 3 4 5 इस तरीके से. I'll just put it up over here because every image in this carousel stands for something, right?
इसको खाली रैंडमली मल्टीपल इमेजेस नहीं डालनी, ईच इमेज हैज इट्स ओन पर्पस. सो carousel में व्हेन यू आर अपलोडिंग मल्टीपल पिक्चर्स, एंड आई विल शो यू दैट टुडे एज वेल, वो कैसे करना है. यू कैन ऐड मैक्सिमम 10 इमेजेस. दिस इज द लिमिट दैट यू हैव. तो जो पहली इमेज होनी चाहिए, दैट शुड बी अ हुक. दैट मीन्स अगेन, are you tired of your life? That's a very pessimistic question, but are you always tired in your routine? Right? वो हो गया. तो सामने वाले को लगेगा अरे यार ये तो मेरी बात कर रहा है. फिर आप उनको रीजन दोगे कि आप टायर्ड क्यों फील करते हो. क्या आप सुबह सुबह इतनी सारी कॉफी पी लेते हो कि आपकी सारी एनर्जी 2 घंटे में उतर जाती है? राइट. सो रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, आप इतने आलसी हो कि कभी एक्सरसाइज का आपने ई भी नहीं किया. राइट. फिर रीजन नंबर 3 कुड बी दैट यू आर सो मच हैविंग कार्ब इनटेक, आपकी शुगर लेवल्स राइज हो जाती है. तो आपने 1 2 3 रीजन दे दिए, ताकि इन रीजन को देख के उसे लगे कि यार सही में ना तो मैं सुबह पानी पीता हूँ, ना तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ना तो मैं मेडिटेट करता हूँ. राइट. उसे हिट करना चाहिए. देन यू आर सेइंग ओवर हियर, यहाँ पे आपके टिप 1 शुरू हो जाता है. टिप 1, टिप 2, टिप 3. राइट. इस तरीके से आपने 3 टिप्स दे दिए कि आपको ये करना चाहिए. तो आपने पहले एक तो हुक बना दिया, एक क्वेश्चन कि ये चीज आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है और तुम्हें पता है. फिर वो स्क्रॉल करेगा कि हाँ भाई कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो रीजन 1 मैंने देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे लिए हो रही है. फिर टिप भी आप दे रहे हैं कि अगर इस जिंदगी से आपको उभरना है तो ये रहा टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3. अब इन टिप्स को हम इनैक्ट कैसे करें? राइट. वो भी सोल्यूशन भी हमें देना है. तो आप उन्हें एक यहाँ पे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन योर केस अपने रिजल्ट्स दिखाए. राइट. कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो रिजल्ट नंबर 1 ये आएगा, और रिजल्ट नंबर 2 ये आएगा, और लास्ट इमेज होनी चाहिए कॉल टू एक्शन. सेव दिस पोस्ट, या फिर शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, या लाइक अस और फॉलो अस. एंड ये अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, अगेन दिस कैन बी रेप्लिकेटेड. तो अगर आप you have different content categories, you have weight loss, you have skincare, you have detox, and in each one of these content categories you can add a hook, and then 1 2 3 4 5 6 7 8. and good thing is कि ये जो आप carousel images बनाएंगे, later on you can repurpose them as videos. You can combine all of these pictures on Canva और एक वीडियो बन जाएगा like a slideshow. So that also becomes very easy. तो images जब हम डाल रहे हैं तो इसका भी आप रेशियो रख लीजिए. You are putting up a single image as well as week में, अगर हम again 7 days पोस्ट करेंगे, पहली बात तो हम 5 days नहीं करेंगे, हम 7 days पोस्ट करेंगे, जिसमें से आपके 4 images होनी चाहिए सिंगल इमेजेस, 4 पोस्ट सिंगल इमेजेस होनी चाहिए. राइट. एंड द अदर 3 शुड बी carousels. और ऐसा नहीं कि मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सिंगल कर दी एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने कराउजल कर दी. ऑल्टरनेट कर लें. MWF कराउजल कर दिया, TTS आपने सिंगल इमेजेस कर लिया. सो देयर इज अ गुड क्वालिटी मिक्स ऑफ कंटेंट व्हिच इज कमिंग अप. और इसी बीच में आपने वीडियोस भी डाल दिए. राइट. सो दीज टू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इमेजेस एज वेल एज वीडियोस, ये आपकी बेसिक गाइडलाइंस है. 4:5. राइट. मोर ऑफ विजुअल कंटेंट. वीडियोस के केस में 15 सेकंड से कम के वीडियोस. अगेन उसमें भी आपको हुक देना है, पेन पॉइंट, सोल्यूशन, कॉल टू एक्शन शुड बी देयर. सिंगल इमेजेस डाल रहे हैं तो सिंगल इमेजेस में फोकस शुड बी मोर ऑन द मेन सब्जेक्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल आप वो दिखा रहे थे मैम, बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर्स दिखा रहे थे. राइट. इन योर केस. सो वहां पर उस पिक्चर में देयर वाज वन फंडामेंटल फ्लॉ व्हिच इज the focus. If you look at as a user, I was getting to see more front on the text. Ideally I would want ki mera as a user my attention should be majorly on the subject, which is the picture. And there's a very simple rule that you can follow in that. In your mobile phones आपने देखा होगा grid आ जाता है. Whenever you are clicking up a picture you have this kind of a grid that comes up, and we want इतना area जो है grid में, जिसको हम कहते हैं 2/3, that should be with a visual. By I don't know कौन से व्यक्ति ने कौन सी रिसर्च करी थी, बट उन महान व्यक्ति के अनुसार कोई भी इंसान जब भी किसी पिक्चर को देखता है तो उनका अटेंशन सबसे पहले 2/3 इलाके में जाता है.
मेंटल अटेंशन वहां जाता है। तो हमें यहाँ इस एरिया में मैक्सिमम इमेज रखनी है, और जो टेक्स्ट डालना है आपको आप यहाँ रख दीजिए इस छोटे से एरिया में। मेक सेंस? दिस विल बी योर गाइडलाइन फॉर योर बेसिक इमेजेस दैट यू पुटिंग अप। अगेन आई नो जब हम करने पर आएंगे तो ये चीजें कई बार हम भूल जाते हैं, जब हम बल्क में डालते हैं चीजें या उस पे करने पे आते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट दिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट मैम, आप एक तरीके से इफ यू कैन create an SOP for all of this, right? That whenever if somebody is working on creating an image, right? So these are the SOPs. Template liya, the main visual should be on the 2/3, text should be on the right hand side, and that is why templatization works as well, because then you know कि text इतना ही आएगा और image यहाँ आएगा. Carousels पे भी same चीज, but carousels are going to be a little bit more wordy with a background image. So carousels के लिए basically the entire background will have an image, and उस image के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा one statement. Okay, again 4:5 if that's possible. I hope this is not getting overwhelming for all of you. It's a lot of information, but we'll catch on to it for sure. Right. Watch Who's the your note making person over here apart from again. you, ma'am? I think we all are too. Chalo, perfect. Good. There Yeah. are some questions that Yeah. were one or two questions that were on YouTube. I just want to एक ही है या दो है. Can we put click button for WhatsApp on both platforms, that is Facebook and Instagram, using Meta Business Suite while creating a post? Yeah. So if you're uploading directly on Facebook, right, not utilizing the content calendar. So if you remember the last class में we'd seen the creator studio where we were scheduling. तो वहां अगर हम bulk scheduling कर रहे हैं, we will not have the option to add the call to action button of WhatsApp. But on Facebook as a platform itself, अगर आप upload कर रहे हैं manually, then you will be able to choose call to action as WhatsApp. So what my suggestion would be, 90% of your content should be scheduled, but that 10% powerful impactful content जहां पर आप लोगों को अपनी community में लाने की कोशिश करेंगे, वो आप manually upload करें on Facebook with a call to action button of WhatsApp. ठीक है. Okay. One other. Can I remix reels from workout? Other ones, I didn't understand this, but can I remix reels from maybe Now other workouts? you'll come to know this in the next class. So who is asking this question? Reels, Instagram has just launched a new thing. पहले क्या होती थी, आप किसी और के रील्स को आप रीमिक्स कर सकते थे, अब आप अपनी पुरानी रील्स को भी रीमिक्स कर सकते हो, और जो इमेज पोस्ट डाल रहे हो उसको भी we have an option to now use it in the remix. For those of you जिनको अभी remix reels नहीं समझ में आ रहा, please do not worry about that at all. अभी नेक्स्ट सेशन में रील्स में हम जाएंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी. I'll have a very specific framework for reels, and उसमें मजा भी आता है, सब लोग क्रिएटिविटी ज्यादा ले आते हैं, and I would really want अगले सेशन में सब अपना इंस्टाग्राम खोल के अनगिनत रील्स बनाए साथ में. Right? Cool. Shikha ma'am, you have a question? थैंक यू प्रियशी. मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपने जो इमेजेस के लिए बताया, ये हमने 2/3 पोर्शन जो यूज करना है, ये वाला, ये सिंगल पोस्ट जो हम कर रहे हैं उसके लिए. कैराउजल के लिए एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए. इमेज कैराउजल में मोस्टली क्या होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड है, राइट, पूरी की पूरी बैकग्राउंड पे या तो एक प्लेन कलर होगा जो आपका ग्रीन या व्हाइट हो गया, राइट, या फिर वट एवर मेन इमेज दैट यूड वांट टू बी फोकसिंग ऑन. ठीक है, जैसे आपने एक लिथार्जिक बंदा दिखा दिया, और उस लिथार्जिक पूरे इमेज पे उसकी फोटो है, और उसके फोटो के बीचों बीच में आपने टेक्स्ट डाल दिया कि आपकी जिंदगी भी इतनी ही आलस से भरी है, सॉर्ट ऑफ, एंड देन यू कीप मूविंग फर्दर. ठीक है. आइडियली आइडियली आई वुड सजेस्ट कि carousel इमेजेस जब हम बना रहे हैं तो बैकग्राउंड पे ज्यादा इमेज ना हो, बैकग्राउंड पे एक सॉलिड कलर हो, बिकॉज carousels में यू वांट पीपल टू सी द मेन कंटेंट, क्योंकि हम 10 इमेज के जरिए कहानी बता रहे हैं,
हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक सॉलिड कलर के ऊपर विथ योर लोगो, लोगो तो ऑफ कोर्स होना ही होगा हर चीज में। हाँ, बाय द वे व्हाटएवर दैट वी आर पोस्टिंग एवरीथिंग शुड हैव योर टीएसटी लोगो, ठीक है। तो कराउजल्स में सॉलिड कलर विथ योर लोगो, प्रिफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड with a very solid looking logo and your text in your brand colors which could be greenish, and वो आपका carousel का format हो गया। So with the main hook first image and then reason 1 reason 2 tip 1 tip 2 result 1 result 2 and so on and so forth। अगर हम 10 नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक हम 4 और 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने रीजन 1 रीजन 2 डाल दिया और फिर हम टिप 1 टिप 2 पे चले गए और रिजल्ट 1 शो कर दिया और कॉल टू एक्शन पर आ गए। एग्जैक्टली। तो आपको फिर बस यही हटा देना है, आपने हुक दे दिया, रीजन 1 दे दिया, रीजन 2 दे दिया, टिप दे दिया, कॉल टू एक्शन दे दिया। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू डोंट नेसेसरली नीड टू यूज ऑल 10। हाउएवर अगर हमारे पास ऑप्शन है, इंस्टाग्राम दे रहा है, तो व्हाई नॉट, माइट एज वेल यूटिलाइज इट। कॉल टू एक्शन में हम अपना फिर वो गूगल फॉर्म का लिंक भी नीचे लोग डालते हैं ना कि यू कैन क्लिक हियर और ज्वाइन कम्युनिटी। सो उसमें आप ये कॉल टू एक्शन में दे सकते हैं, फॉर मोर सच पोस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो, right? Or to join us, to transform your life, click on the link in the bio. तो then invariantly उनके subconscious में आ जाएगा। हाँ, this is another call to action which is very good point that you've made। Instagram पे क्योंकि हम हर पोस्ट पे लिंक नहीं डाल सकते, Instagram पे केवल एक ही जगह है जहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं, वो है हमारे बायो के नीचे, राइट? तो वहां पर हमें बोलना होगा इन आर एवरी कॉल टू एक्शन कि आप अगर आप फॉर्म पे बढ़ाना चाहते हैं क्लिक्स, click on the link in the bio to transform your life or to join this community or to become a better version of yourself, इस तरीके से। Thank you so much. Yes. Yeah, I see Archana and Siddharth hands raised as well. Yeah, Priyash, I had a couple of questions. First is जो वीडियो पे लोगों की हमने बात की थी, तो हर एक स्लाइड में उसमें लोगो रहना, आपकी आवाज कट गई, sorry, go ahead. Hello yeah go ahead now. Am I audible? Yes, अब बार बार म्यूट हो जा रहे हैं, लेकिन कहा था कि वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें लोगो हर स्लाइड में रहना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दैट वीडियो? बेटर है हर स्लाइड पे हो। उसके दो रीजंस है। एक तो थ्रू आउट द वीडियो आपका लोगो दिख रहा है, सबकॉन्शियसली आपके ब्रांड को पहचान रहे हैं। दूसरी चीज ये है, कल को कोई और उस वीडियो को इधर उधर से डाउनलोड करके रिपर्पस नहीं कर पाएगा। एंड हाउ टू डू दैट? उसमें आई वाज ट्राइंग इन दैट ऐप, वो सॉरी जो लुमेन 5 कर रहे थे लुमेन पे। हाँ, तो उसका टर्न अराउंड ये है। आई थिंक सेशन की शुरुआत में मैं यही बोल रहा था कि अगर लूमेन 5 पे आप यूज कर रहे हैं तो आपको पेड प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज लूमेन 5 वाला वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, कैनवा पे अपलोड कर दीजिए। तो कैनवा पे जब आप अपलोड करेंगे तो वो पूरा वीडियो खुलकर आ जाता है, एंड देन फिर ऑटोमेटिकली आप अपना लोगो, जो ट्रांसपेरेंट वर्जन ऑफ द लोगो है, वो आप प्लेस कर दीजिए एंड थ्रू आउट द वीडियो इट विल कम। बिकॉज एनी विच वेज आपको लूमेन 5 जो फ्री वर्जन है, वो वीडियो आपको कैनवा पे अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में वो वीडियो मेड बाय लूमेन 5 आ रहा है जिसको आपको काटना है। तो एनी विच वेज आपको उसमें डालना ही है कैनवा पे, तो आप कैनवा पे अपलोड कर रहे हैं तो, लेकिन ट्रांसपेरेंट वर्जन, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर हम सॉलिड वर्जन ऑफ द लोगो लेते हैं तो हमारे वीडियो पर वो बहुत ही सुपर इम्पोज्ड और खराब सा नजर आता है। तो ट्रांसपेरेंट वर्जन ऑफ द लोगो सारे वीडियो पर हो एंड इट वुड बिकम अ बेटर विजुअल अपील। तो प्रयास के हमारे लोगों को एक सेकंड मैनेज, यू वांट टू फिनिश योर क्वेश्चन सिद्धार्थ? कैनवा पे भी कई सारे इमेजेस में ना वो कैनवा का प्रिंट होता है। हाँ, वो प्रीमियम इमेजेस हैं, आप उन्हें यूज मत करिए। बहुत सारे फ्री इमेजेस ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल हैं। वहां नहीं तो आप ये एक दूसरा फ्री इमेज का डंप है, फ्री पिक, राइट? यहाँ से भी आप बहुत सारी फ्री स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करके कैनवा पे यूज कर सकते हैं। अगेन वेरी गुड पॉइंट, सिंस वी आर ओवर हियर, व्हाट आई वुड सजेस्ट, जितना ज्यादा आपके पास कम्युनिटी की इमेजेस हो, रियल लाइफ लोगों की इमेजेस हो तो सही है, बट इन केस यू आर नॉट एबल टू डू दैट, क्रिएट अ डंप ऑफ इमेजेस। आपके पास एज अ टीम 100 200 300 स्टॉक इमेजेस होनी चाहिए which you can keep on repurposing. So for example, if I type exercise over here, तो मुझे एक्सरसाइज से रिलेटेड काफी सारी इसी वेक्टर्स मिल रहे हैं, इमेजेस मिल रही हैं, which I can simply if I right click on it and in fact just click on it and यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है to download this for free.
right? So if you're not finding certain images on Canva, look at this, ये काफी सही है. बर्निंग कैलोरीज से रिलेटेड कितनी सारी अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, हिट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आप अपना जो कंटेंट कैलेंडर या कंटेंट बास्केट व्हाट शालिनी हैज क्रिएटेड, उनको देखिए कि उसमें कौन से टॉपिक्स हैं, और हर एक टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से डाउनलोड मल्टीपल different kinds of these stock images which you can keep on utilizing on across different posts, and these are high quality good quality images as well. यहाँ पर भी आपको कुछ प्रीमियम में दिखेंगे, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्राउन बना हुआ है, सो उनको मत चूज करिए, बट यू विल हैव मोर वैरायटी टू डाउनलोड फ्रॉम हियर ऑन फ्री पिक. एंड अनदर दूसरा, अगर यहाँ पे भी खत्म हो जाता है, देन यू हैव शटर स्टॉक, राइट? शटर स्टॉक पर भी जाके यू कैन फाइंड सर्च फॉर इमेजेस, लेट्स से meditation. Right now, see that some very nice, good-looking, high-quality images. अब कोई ये, for example, this is such a nice picture that the entire family is meditating together. आपने ये upload किया और फिर वहां पे अच्छा caption आ रहा है, done. So आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपने template में डाला और चीजें बन जाती हैं, right? So that kind of creativity you can have, Siddharth. Perfect. One is free pick and another you showed Shutterstock. Yes. And Shutterstock. one more thing, for carousels, you said background should be one image. I heard it One right? image, और I would, देखिए अगर आप carousels बना रहे हैं, या तो ऐसी इमेज होनी चाहिए. If you look at this very carefully, this is an empty space image. अगर आप देख रहे हैं, most of the space is empty. So अगर आप अपना यहाँ पर text डालते हैं, it will be visible. In a single image post, my focus needs to be on the visual, on the picture itself. But in a carousel image post, my focus needs to be on the text, right? तो अगर हम बैकग्राउंड या तो ऐसा ट्रांसल्यूसेंट टाइप रखें जहां पे योर टेक्स्ट कैन बी द हीरो, या फिर आप सिंपल व्हाइट कलर बैकग्राउंड रखें विथ योर लोगो. ओके, अब ऐसी इमेज पर अगर मैं ब्लैक टेक्स्ट लिखता हूं या थोड़ा डार्कर कलर शेड में लिखता हूं, then it is, the text is going to be very heavily visible in a carousel. So if you are using background images in carousel, use these kind of lighter shade images, या फिर simply use a solid color background. इस तरीके की इमेजेस आप carousels के लिए यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ी सी डार्क हैं. यहाँ पे फोकस इज ऑन दीज, एंड इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज इमेजेस, ये जितनी भी हाई क्वालिटी इमेजेस, सी दैट मेंटली ऑल्सो यू विल सी ग्रिड एरिया, ये 2/3 एरिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई आपको जो टेक्स्ट डालना है. Each and every image which is over here, primarily the main subject is in the 2/3 area. So your before and after, your exercising videos, your recipe images, everything कोशिश करें कि वो इसी इलाके में रहे. Okay, even when you're clicking pictures, if you're doing it through your mobile phone of live या कैमरा से कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्रिड आ जाती है, एंड कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट कि जो मेन लोग हैं वो उस 2/3 वाले ग्रिड में आए, राइट? ऑल्दो मेरी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ही वाहियात है, मुझे रोज सुनाया जाता है उस पे, बट आई होप आप लोगों को थोड़ा इंसाइट मिल रहा होगा यहाँ पे. कूल. एनी फर्दर क्वेश्चन? Excuse me, sir, ये सॉरी, शटरस्टॉक यस. जो आपने अभी नाम लिया, ये भी एक कैनवा और ल्यूमिन की तरह वर्क करेगा? नहीं, ये केवल डेटा इमेजेस डाउनलोड करने की जगह है, जहां से अगर आपको फ्री इमेजेस चाहिए, कैनवा पे आपने देखा बहुत सारे आइडियाज देखे, इमेजेस नहीं मिली, तो आप शटरस्टॉक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फ्री पिक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए. जो फ्री इमेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, ये उनकी रेपोजिटरी है, डेटाबेस है. I think Priyash, free pick would be a better option because Shutterstock is generally paid. Yeah. Unsplash एक website है Another जो one. कि free देती है. Unsplash. Yep. You There's can go on Envato Unsplash. also. So there are many like that. I think Priyash, we can share the names. There's Unsplash, there's Envato, I really recommend Envato as well. Yeah. Because they have a lot of different kinds of things. यहाँ पे आपको इतने सारे, in fact, even if you want to be working on your specific क्या कहते हैं उसे, templates, right? So Envato elements, if somebody can make a note of this, यहाँ पे you can literally download the entire social media guideline. अगर आप देखें यहाँ पर you have graphic templates, so product mockups, infographics, ये बहुत सारे अलग अलग हैं
right? If I simply search for social media templates, And there right? wouldn't be any copyright issues with this, with the No, Envato? you can make subtle changes. For example, यहाँ पे you can download this entire social media kit, right? And ये golden color में है भले, and you can change it to your colors. Make sense? Now see that इसमें आपको image post के लिए भी templates दिए हुए हैं, and single images के लिए भी हैं, carousels के लिए भी हैं. So you can literally download an entire good looking template that you'd want and then make use of them. तो templates बन सकते हैं. Plus see, video templates are also over here, right? If you'd want to be getting, let's say, Instagram. So these we would video. upload in our Canva, and because if we create Yes, in you Canva, just need to download them once. Now see that for stories, for Instagram stories के templates हैं यहाँ पे. Just need to download them once, upload it to your Canva account, and you can start editing over there itself. बिल्कुल, ठीक है. Right? So I would really suggest if somebody can take a note of this. Envato elements हो गया. This can really help out, and thank you for reminding that, Hitaishi, because हम daily basis पे इसको use करते हैं, and I don't know why दिमाग से निकल गया, but this is a very good resource for you. आपने अभी बताया इसका नाम क्या है, एक बार बताएंगे सर? Envato elements. शालिनी हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, ठीक है, सबको पोस्ट कर देंगे. तो हिताशी, आप भी जैसे बोल रहे थे, अगर कोई और है, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द व्हाट्सएप, फिर मैं सारे ये ग्रुप को भी और सबको मैं कर दूंगी फॉलो. I am putting it on WhatsApp right away. ठीक है, थैंक यू. Perfect. So I hope this content creation in terms of images and videos अब properly clear हो गया होगा. So given the history that we have had now in terms of templatizations, in terms of content ideas, content buckets, if you want to discuss that content bucket also right now, we can do that. Right? If you want to be getting certain perspective, let's do that. We want to do that this session for sure, because अब हम इस week create करेंगे ना. हाँ, so let's do one thing. Any which ways, it's around 7:20 right now. Rather than talking about anything new, let's fine tune everything that we have right now and उसको इस week implement करते हैं. So यहाँ till images and videos, layouts, templates, different tools, stock options, I hope you guys have understood and note down कर लिया है. If you want to go ahead and now discuss the content basket that you have, before we do that, one very quick thing कि जो हम timetable या schedule की बात करते हैं, now this is recommended by Instagram themselves, and I think I'm पता नहीं deja vu हो रहा है मुझे if I've mentioned this to you guys or not, but primarily जो feed content है, right, which is your single images, right, या फिर carousels, या फिर those simple 15 सेकंड से लेस वाले वीडियोस, ये होने चाहिए कम से कम once a day, right? Feed content. Then we have stories, जो Instagram stories हैं या Facebook stories हैं, ये आपके कम से कम 5 से 8 narratives होने चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? If you look at stories from other accounts, आप 5 से 6 बार टैप कर रहे हैं, तब जाके आपको पूरी उनकी कहानी, पूरी स्टोरी समझ में आ रही है, right? Rather than uploading just one single image in your story या one single video, ट्राई कि जो अगर 1 मिनट का वीडियो है वो ब्रेक हो जाता है, अपने आप ही स्टोरी में ब्रेक हो जाता है, when you're uploading it, it gets broken into 5 to 8 different taps. So tap number 1, tap number 2, tap number 3, tap number 4, tap number 5. जितने ज्यादा टैप्स होंगे, आई डोंट वांट टू गो इनटू मेनी टैप्स. बहुत ज्यादा टैप्स हो जाते हैं अगर स्टोरीज के, तो लोग बंद कर देते हैं. दे वांट टू स्किप वेरी क्विकली. सो 5 to 8 narratives per day, right? Then if we talk about reels, to begin with, 3 times a week, and not right now, but once you have good traction on your community, when you have good amount of followers, you would want to be doing at least 2 Instagram lives per month. Yeah, I had that question about lives. ठीक है. Right? And in that case, I would suggest कि अगर आप 2 lives कर रहे हैं, always bring in one, the face of the community, let's say you yourself, and to make the community more, sorry?
We can have collaboration, we can have guests. Exactly. Guests, collaborations, and the most active members of your community as well. So one very important thing about community management is incentivizing people for the work that they've been doing. So let's say over a period of time, right now you have 50 people. अगर आगे चल के 100, 150, 200 जन हो जाते हैं, तो आप उनमें से you handpick certain people on a month on month basis कि इन्होंने काफी अच्छे results दिए with the work as well as with this entire fitness journey. तो आप उनको मौका दें that एक लाइव आप होल्ड करेंगे, अपनी कहानी बताएंगे. Bring people to spotlight. That's sort of like awarding them for the deed that they've been doing. उससे आपकी engagement भी बढ़ेगी, लोग भी और active proactively काम करेंगे with your communities. So lives को आप उस हिसाब से कर लें. So this is a very straightforward timetable, right? When to post, like for example single image one per day तो कर दिया, लेकिन कितने बजे करना है, I hope you remember, आप insights देके देख सकते हैं when are your followers going to be most active, right? ये तो आप तब करिए when your followers are going to be most active. Reels India time की अगर हम बात करें, mostly between 7 to 10 PM is the ideal time. Any reel that you want to upload 7 to 10 PM के बीच में ideal time है. Stories I would suggest कि ये 24 hours के लिए live रहती हैं stories, right? इसको put up somewhere around the lunch time 1 to 2 PM. जब लोग बोर हो जाते हैं, ऑफिस से भी पक जाते हैं, खा रहे होते हैं, they'll put up the phone and start looking at content, right? Then again later on in the evening also they might be able to see it live again when most of your followers are going to be online. After looking at this timetable, after looking at this information, आप इसको आप reverse engineer करिए with your content basket. That how many pieces of your content are actually feed content worthy. कितने ideas ऐसे हैं जिन पे reels बननी चाहिए, कितने ideas ऐसे हैं जिन पे stories बननी चाहिए, right? So now when you will see the content calendar right now, उसको हम थोड़ा break कर लेते हैं. That these are your reel ideas, these are your feed content ideas, these are your story ideas, and so on and so forth. Okay. But before we do that, any other questions? Yes, प्रेस जी. Yeah. एक क्वेश्चन है, जैसे हम स्टोरीज डाल रहे हैं और सपोज मैंने कोई मेडिटेशन के ऊपर, मैं मेंटल हेल्थ के लिए कोई पोस्ट कर रही हूँ और पोस्ट मतलब स्टोरीज पे डाल रही हूँ, और मेरे पास किसी बुक का कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ है या कुछ है, वो भी मुझे शेयर करना है, तो मैं उसी के साथ में शेयर कर सकती हूँ? Definitely, Kali, and that's a very good content type as well. This is self help books हो गई, या आपको कहीं पे लगता है कि ये कोटेशन अच्छा है, क्लिक कर लीजिए पिक्चर, हाईलाइट कर लीजिए, या पेन से हैंड रिटन उसमें आप करके पिक्चर डालिए, अपलोड करिए. दैट लुक्स आल्सो वेरी विजुअली अपीलिंग एंड थोड़ा पर्सनलाइजेशन भी आ जाता है, राइट? ओके. ये बुक क्यों यूज की है, ऐसे कुछ इशू नहीं आता ना बुक रिलेटेड? आप बस जो पॉइंट आप, इनफैक्ट उनके लिए तो फायदेमंद है, राइट? अच्छा. जिसकी भी बुक का कोटेशन है, अगर आप उसे टैग कर दे रहे हैं या उस बुक का नाम लिख दे रहे हैं, उनकी तो प्रमोशन हो गई, राइट? सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. आप जो भी आपको सही लग रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, share that as much as we can, as much as you can. I think if we give credit to जिसकी भी हम हाँ. book कर रहे हैं, that is perfectly fine. And But that will you also cannot actually help create your you. content with just their writing. Exactly. Like that. It needs to be and this is something called content curation, right? अगर आपके पास टाइम नहीं है fresh content create करने का, then you can look at books, you can look at quotations, you can look at that, as long as आप उसमें अपना viewpoint भी डाल रहे हैं. Why did you like this quotation? What is the learning you should have, right? What kind of essence can you bring from this quotation or from this particular book? अपना viewpoint डालना जरूरी है, and then you give the credit to the author or to the book, टैग कर दें. उससे फायदा ये भी हो जाएगा कि अगर उस ऑथर को कोई ढूंढ रहा होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या उस बुक को कोई ढूंढ रहा होगा, चांसेस हैं कि आपके पोस्ट और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी लोगों के सामने आए. तो हमें स्टोरीज पे भी टैग करना है? सॉरी, नहीं, it's okay. You finish first. स्टोरीज पे भी टैग करना है, या हम उसका बुक का फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं? फ्रंट पेज से ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसके अंदर का जो, हाँ, आप उनको टैग कर दीजिए. डोंट पुट अप द फ्रंट पेज, देन इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ, दो चीजें हो जाती हैं.
सामने वाला टारगेट ऑडियंस ये सोचने लगेगा कि अच्छा ये तो बुक प्रमोट कर रहे हैं, बट हमें फोकस करना है उसके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में. So you can recommend, but don't directly put up the picture of the cover. Okay. Thank you. Okay, right. Ma'am, you had a question? Yeah, another question. At some point before we end this meeting, मैंने एक video तैयार किया था Canva के through. I want to show it so you can criticize it and so we make better stuff. It's No my worries. first ever thing, so yeah. Do you want to do that first, or do you want to look at the content bucket? Let's do the content calendar. वो बाद में कर लेंगे. All right. So should I give you the host access to share your screen? Yeah, I should have it open already. Let me just check. By the way, you guys have a lot of grit. अगर मैं आप लोगों की जगह होता अभी तक या तो सो गया होता वीडियो ऑफ करके या कहीं गायब हो जाता. Priyash, we're serious about this. You will see in the next few months. आप हमारे पेज पे आओगे तो देखना. Right. That's great. Priyash, I wake up at 4 a.m. morning. It is 6 o'clock early morning. Yeah, we're in the You same look so time. fresh. How do you look so fresh? सीधा ऑफिस से आऊँ. Excited about this. That's why. नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि आप बहुत अच्छा एंगेज करते हो, तो ये भी कहा जा सकता है. Yeah, ओहो. याश वो तो क्या कहते हैं understood ही है. वो तो हमने पहले ही आपको बोल दिया. Every time बोलते हैं. Credit goes to Loveleen madam and Priyas ji. इतना अच्छे से समझा रहे तो अच्छे से समझ में आ रहा. Thank you so much. अब लाइफ में लगने लगा है कि सोशल मीडिया वो चीजें जो हम भी कर सकते हैं. कर सकते हैं, बिल्कुल. Yes, and we'll do it in a good. So इसमें अभी changes आएंगे क्योंकि हमने बात करी है, ये बहुत ज्यादा broad हो गया था. Oh, let's admit, Ashish. Is this shareable? Yeah, I could share it with you. Do that as well if you can, whenever. Okay, so Monday, this we had seen, motivational Monday. Yeah, but we're gonna change this a bit. For example, I'll tell you, तो हम इसमें से aging seniors, chronic disease, क्योंकि we don't want to appear कि we're doctors, helping with chronic disease, and children's का निकाल रहे हैं. So main हमारे रहेंगे fitness, right? Exercise, and then it'll be more on the क्या नाम है ये वाला nutrition and preventive care. So these will be our main content buckets. Nutrition, exercise, and sorry. So ये आ गया, Wednesday भी आ गया, women's, and this is perfect, right? Women's and men health, healthful living, and mental. So it'll be this, but not chronic disease management. Makes sense. But right? If not chronic, could we do that lifestyle management or lifestyle yes. Is something important? Lifestyle is the number one on our thing. So fitness, and then lifestyle illnesses, which is rampant in our community or around the world. So that is definitely there. Yeah. Now, in each one of them, for example, what you can also do, let's say we're talking about exercise and physical activity, you can subdivide it into different content types. One is tips, other, as you've mentioned, story or testimonial. Third could be a video showcasing some of you or one of you actually doing it and uploading it, right? Yeah, form कैसा होना चाहिए, posture कैसा होना चाहिए, कितनी देर के लिए कौन सी exercise करनी चाहिए. So it a little bit of more educational, but in a visual format. Then when we talk about nutrition and healthy eating, the best kind of content जो Instagram पे बहुत जल्दी viral होता है वो है खाने के videos, खाने के और कुत्ते के videos, right? So if we can have that actual recipes being created or getting packaged, right? या फिर आपने ingredients दिखा दिए of a DIY meal, of a quick meal, again वो visual भी हो जाता है और यहाँ पे carousel भी use हो सकता है very efficiently. For example, पहली image आ गई, a 5-minute breakfast recipe. Image number 1 पे आपने ingredients दिखा दिए, image number 2 पे आधा बनता हुआ दिखा दिया, and then finished product दिखा दिया. So that could come, a short video could come. When we say women's and men's health, could you be a little bit more specific as to what we're trying to put up over here? We may not do this separately.
unless we have enough content for both. Okay. Unless we have enough content for both. Yeah. And when we say women's and men's health, is it their mental health that we're talking about, physical health, or it covers everything? No, because certain stuff affect women and certain affect men, right? Yeah. So that is still up for right. So then we'll have lifestyle and prevention. That I think is a much more broader and a better topic, because when we say lifestyle, usme we can talk about PCOD, which is a women centric thing. Yeah. Right. And for men, we can talk about, let's say, although high blood pressure is related to both the genders, but it's more common, let's say, in men. So yeah, and lifestyle, testosterone issues, prostate issues, and all of hair loss issues, which is much more rampant in 30 and above, right? How is it directly related to what you eat, what you put, right? So wo cheezein aa sakti hain. But I really like this sleep hygiene. This is a big problem for most people today because of their screen time, how much time they spend with laptops, computers, how much time they spend on the devices before they go off to sleep. Right, there's a lot that is happening, and a good night's sleep has direct implications on your health, and there are plenty of people who do not have that. Right. Yeah. And more specifically, I think what could be a good way is because of the busy lifestyle, people usually get 5 to 6 hours of sleep. But looking at Rakesh sir, I think वो 4 घंटे ही सोते हैं. I don't know कितने घंटे सोते हैं, but उसमें भी there's a lot of freshness coming. So that needs to come out, right? So whatever your secrets are, that needs to come to Priyash कि भाई तुम 4 घंटे ही सो, बहुत मेहनत करो, लेकिन तब भी तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी. So I think that sleep hygiene, and because we speak to a lot of people in and around, that is a very common problem. Yeah. Right. Aging and senior health, you are getting We're rid leaving, of. we're not, we're not putting that, or we're not putting children separately, but because It has got a more 25 to 45 hai, it'll automatically, as people start following us, they'll automatically want to know that too. And then we'll see, but not right up, because then we're going too broad. We're just becoming like, a bucket for everything otherwise. Even preventive care is a subtopic for your lifestyle management. Yes, it is. Lifestyle and prevention will come in one, and then we'll have everything there. Okay. So moving forward from here, what you should be doing is just clean this once and have your major 5 to 6 pillars. So you have exercise and physical activity, then you have that recipes, our nutrition, and then lifestyle and sleep hygiene, which it is part of the lifestyle and prevention, the sleep. Yep. It's separate. I mean, also sleep and the mental health can be together. Exactly. Yeah. Mental health detox. We have not mentioned about mental health usme kahin pe bhi as a topic. That is part of it. That is part of it. Yeah, that is very important. Also, I'd like you to think of the end goal as well. The kind of products that you would ultimately be selling. Reverse engineer in them कि आपके पास किस तरीके की inventory है for which of these different kinds of ailments, and try and create more content around them. Your content pillar should be surrounding to them, because I think we're doing a lot of nutraceutical products as well. Yes. Right. So whether it is for sleep, whether it is for energy, whether it is for that. So ultimately people should feel कि इनके पास solution है, although आप directly market नहीं कर रहे हैं उन products को on Instagram or on these platforms, but they should be able to make a link later on that you are suggesting them to buy such kind of products. Right. So we will, when we talk about nutrition, when we talk about prevention, we will have posts about that, ki, why supplements are important. Perfect. As long as we're not getting too much into the pharmacy of it, no, not at all. बचा के रखना है, right? It would be good, like when we talk about why magnesium intake is good, right? Why collagen is good, rather than talking about directly ki the chemical formulations या फिर it should not sound that you're prescribing it, because Instagram फिर उसको problem करेगा. When you start looking at prescribing a medicine, you can't do that. But when you tell about the good things of nutrients, elements, that is fine. You should keep doing that as well. Absolutely. Right.
in a way your user, your audience should feel कि अगर मैं टीवी इस पे जा रहा हूँ on this particular Instagram channel TST पे, then I should feel that there's every knowledge that I can gain from here related to all the things, be it physical, be it mental, be it what I eat, be it my lifestyle, be it my thought process. Yeah. Right? Removing toxicity from your life, staying away from toxicity is also directly proportional to your mental and physical health. So that kind of things we could incorporate, and you'll have a lot of seasonal things as well. जैसे winters आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया में या चल रही हैं, then you talk about those seasonalities. Then change in weather में how you can do that. Summers में what kind of issues come up. उस seasonality को भी मद्देनजर में रखते रहिएगा. बिल्कुल. ठीक है. Cool. So I think yeah. आपने अभी बताया तो I think chronic disease को हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो can we talk about how we can improve the कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर जो भी वो, या हम यहाँ बात I think वो लाइफस्टाइल में आ जाएंगी. योर हार्ट लिवर थिंग अगर हम जा रहे क्रॉनिक में नहीं जा रहे हैं, बट वो लाइफस्टाइल, अल्टीमेटली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट लीड्स टू क्रॉनिक डिजीजेस. तो अगर हम डायरेक्ट क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी सी आ जाती है, राइट? डिप्रेसिव सा लगता है. सो इट्स मच बेटर कि हम उन्हें पॉजिटिव लाइट में ले जाए. ओके, कूल. Yes, Deepak ji, you were raising your hand previously. Sorry, just a reminder Yeah. for today, like after you had said that you'd give us some kind of an inventory of tools in an Excel sheet or something. So वो अगर बाद में आपकी team. हाँ, I'll note it down. Just give me a second. And also the calendar, how you do your content. So. I'll get it sent or get it uploaded on the drive. If not today, then by tomorrow. So you need the sorry. So a inventory of tools that we can use. Then second is you had mentioned that you have like this content calendar. Yeah. Content calendar format kind of a thing. Right. And also it's very important for us, especially don'ts, like the do's and don'ts, the copyright issues that can come up. So will we, वो हम करेंगे discuss किसी point पे या so mostly what is happening is while we are talking about things, I am putting up but it's good that you I'll send across a simple file which you can circulate. So whenever things are getting done, like an SOP, you can sort of have everything shot down and send it across. So do's and don'ts on content creation. प्रयास है हम लोगों ने जो पॉइंटर अभी नोट किए हैं उससे हमें बनाना है कुछ पॉइंटर्स आपने हेडलाइन और वीडियो इमेजेस क्राउड का बताया ना. So I would suggest कि अगर आप लोग खुद डिस्कस करके बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगी लॉन्गर टाइम के लिए, राइट? एंड एवरीबॉडी विल बी कोलैबोरेटिवली वर्किंग ऑन दैट. अगर मैं बना के दे दूंगा तो फिर वो एक साइड में रखने वाला. नोट कर लिए. अगर आप बोलोगे देन माय ओनली पॉइंट इज दैट कि कई बार कुछ उसको आप एक बार रिव्यू आप दिखा दीजिएगा, रिव्यू करवा दीजिएगा, सो दैट उसमें अगर कुछ और एलिमेंट्स डालने हैं, रिमूव करने हैं, फाइन ट्यून करना है, दैट वी विल डू टुगेदर. ठीक है. Right. But you can ask your question. Yes, Priyas ji, today I was talking to one of my friends regarding this. So he just shared that कि nowadays Instagram में hashtags are not working that very well. उन्होंने कुछ नया add topic something. So I don't know, शायद मैंने मिस कर दिया है ये टॉपिक. आपने कवर किया होगा. नहीं, अभी कवर नहीं किया. आई वांटेड टू डू दैट टुडे, बट बिकॉज हम ये चीजें फाइन ट्यून कर रहे थे, सो आई हैव डेलिबरेटली मेड अ डिसीजन कि इसको हम आज ना करके अपकमिंग सेशंस में करें. हैशटैग्स खत्म नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं अभी भी, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें हैं. बट हैशटैग का ना मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था. मिसयूज इन अ सेंस कि इंस्टाग्राम बोलता है 30 हैशटैग आप यूज कर सकते हो, तो कुछ भी रैंडम चीजें लोग डाल रहे हैं, हैशटैग दिस हैशटैग दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इनफैक्ट देयर इज अ फॉर्मूला दैट इंस्टाग्राम इटसेल्फ प्रिस्क्राइब्स कि डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने फॉलोअर हैं, आपको कितने हैशटैग्स यूज करने चाहिए, किस तरीके के हैशटैग्स यूज करने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स टॉपिक्स भी आप उन पे ऐड कर पाएंगे व्हेन यू विल बी अपलोडिंग योर कंटेंट. सो दीपक जी, वो आई वांटेड टू डिस्कस दैट टुडे, बट नेक्स्ट सेशन में हम उसको ले लेते हैं, wherein we can have more time and discussions. Otherwise अगर मैं आज करूंगा तो आई थिंक कंप्लीटली सब बोल्ड हो जाएंगे.
No issue, sir. One more added question regarding that only. I was looking into that how to add topics and also. Is it possible that we can search out more topics? या जितने topics उसमें दिए हुए हैं, we have to add out of them all. You That can only. search. You can search. We can search. Yeah, you can search. Absolutely. Thank you. Thanks. All right. Yeah. Any other further questions before I go to ma'am to review the video? प्रियश, मेरे को ये पूछना है, जो इन्वेटो आपने बताया उसमें हाँ जी। पेड ही दिखा रहा है, वो फ्री के लिए नहीं है अवेलेबल? उसमें हम जैसे कुछ चीजें तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, बट व्हाट वी डू वेरी यूजुअली व्हाट वी डू इज प्राइमरली हमने जैसे एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसमें कुछ $39 ऐसा एक महीने का सब्सक्रिप्शन होता है एनवाटो एलिमेंट्स में, एंड जितनी चीजें मैक्सिमम डाउनलोड करनी है वंस एंड फॉर ऑल वो कर लेते हैं. प्रॉब्ली आपको उसमें कुछ फ्री ट्रायल भी मिलता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो मेक इट अ कॉन्शियस डिसीजन एज अ टीम कि अगर आपको उसको यूज करना है तो आपने एक महीने के अंदर इतने एफर्ट्स मिला दे कि सारा का सारा कंटेंट अब आपके पास हो जाए. इफ यू डोंट वांट टू यूटिलाइज इट रेगुलरली, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि कंटेंट टेम्पलेट्स के लिए यू कैन लुक एट इन्वाटो एलिमेंट्स, या ग्राफिक्स के लिए या वीडियो टेम्पलेट्स निकालने हैं. वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर पॉसिबल है, लेट्स डू दैट, निकाल लेते हैं एंड देन कीप इट फॉर देम. एवरी डे अगर आप 10-15 भी करते हैं तो एक महीने में आप 450-500 कंटेंट डंप बना के रख सकते हैं, जो बहुत है पूरे साल भर चल जाने के लिए. Yeah, we'll do something like that for sure. All right. For Canva, अभी हमने एक SN tokens के द्वारा we've done like it's like a lifetime thing. We've joined a classroom to be part of the pro. All right. So, Okay. That's good. Perfect. Right. Any other further questions? Okay. In that case, इन्वेटो बताया आपने प्रयास, इससे बेसिकली पहले मुझे डाउनलोड करना है और वो इमेज को कैनवा पे जाके लेके जाना है फॉर एडिटिंग, राइट? Yep. कैनवा पे नहीं तो अगर आपकी टीम में जस्ट इन केस एनीबडी इज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आर्टिस्ट, आप उनको दे सकते हैं एडोबी पे एडिट करने के लिए, फोटोशॉप में करने के लिए, बट वेरेवर यू किसी भी बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे आप उसे ले जा सकते हैं. एक क्वेश्चन है, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग लोगो, उसका मींस लोकेशन फिक्स कर सकते हैं हम लोग किसी टेम्पलेट पे, सो दैट वो शिफ्ट ना हो? हाँ, वो जब आप इमेज पे डालते हैं तो वो फिक्स्ड ही रहता है, या वीडियो पे अगर आप नहीं डालते तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा. नहीं, एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग न्यू इमेजेस और न्यू फीड्स और समथिंग इन So दैट केस. I mean that's why we have mentioned कि आप हमेशा टेम्पलेटाइजेशन कर लें, so you'll always know कि लोगो इधर ही प्लेस होना है, इमेजेस यहीं आनी है. तो वो जो 2/3 वाला इलाका है ना किसी भी इमेज में, वहीं पे आपका मेन जो क्या कहते हैं मेन हीरो ऑफ द पर्टिकुलर इमेज होना चाहिए, एंड उसी 2/3 इलाके में ही आपको अपनी लोगो डाल देनी चाहिए. ये दो चीजें लोगों के अटेंशन में ज्यादा आसानी से आ जाए तो बेहतर. ओके. 2/3 जो लेफ्ट वाला पोर्शन था, राइट? हाँ जी. Yes. और राइट में अपनी टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट लेफ्ट में ये जैसे इमेज का वैसे तो हमारा टेम्पलेट फिक्स हो गया है, तो लोगो भी हमारा फिक्स रहेगा या फिर वो कलर के हिसाब से अलग अलग लोगो हमें रखने होंगे? जैसे भी लाइट ग्रीन हमारे को मिला है, दैट इज देयर, तो वो That लोगो could be your design decision, right? अगर आपके कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क है तो आप लाइट वर्जन ऑफ द लोगो यूज कर लें. अगर कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वाइस वर्सा है तो आप वैसे कर लें. एज लॉन्ग एज लोगो का जो मेन क्रक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, कलर्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, दैट्स फाइन. See, Shalini and SN tokens they created, मैंने शेयर भी किया हमारे ड्राइव पे, तो हमारी लोगो का एक तो ग्रीन है, right? Then it's with the name, the body, mind, soul. Or then there's different versions without a background, with a background. So we can pick it's green or the white or the black, depending on our, I guess, whatever we're using ना, क्योंकि हर एक अलग कलर का अगर बैकग्राउंड है तो ग्रीन नहीं ठीक लगेगा, तो उसमें ब्लैक यूज कर सकते हैं या व्हाइट यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आपने मनोज देखा है, जो एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया उसमें शायद व्हाइट में है, द लोगो इज द सेम, इट्स जस्ट द कलर डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड उसका बहुत ही लाइट ग्रीन है, वो मैच नहीं करेगा इस शायद. या तो आई मीन ये सारे
भी फाइनल होंगे ये लोगो वहाँ पे हमारे को मिल जाएंगे ऑन दी ड्राइव, जिससे हम लोग इसको बेस्ड ऑन द टेम्पलेट यूज करते It's रहेंगे वो already there. पोजीशन। Yeah. ठीक। So I know this needs a lot of improvement, Priyash, but I want to share it specifically. I don't mind if it's bad, ताकि हमें कुछ, we can get some critical, thinking on how it No should worries, be. ma'am. First one ever, okay? So, all right. So I will need sharing. I Right. think you already have the. Okay, let me just make you the host. Or do it to my, yeah, I'm logged in with my phone. Usko Okay. kar do. My video is off in that. It should just come up as Loveleen, I think. Let me raise my hand with that. Agya? Or I'll raise my hand. Is this one? It just There, has I your. just raised my hand. Yeah, see if you've got the access. Yeah. So I tried my hand at Canva with this. Let's just go to Canva. Okay, so should I just play it? This is 20 seconds. Obviously, I'll have to shorten it. So where's the beginning of it? Just click on that play icon. Yeah, it has to start from the beginning. Okay, let's see if it. There's no music, huh? Yeah. All right. So two things. Yeah. Number one is Let me जो stop font. sharing. Sorry. Yes. Number one thing is जो text font that we've used, that I feel if you use a very straightforward one, which is much more readable, on mobile devices that can get a little bit clustered and you'll probably find it difficult to read. Number two, to speed of the slides as it's moving. So by the time I'm able to complete reading, let's say one tip, it moves on to the other. So either we reduce the text part so that it's easily readable and consumable, right? Or why increase the delay, increase the size, the video length of that individual slide. Apart from that, this was looking good. Again, जो images हैं right hand side पे या जो video templates हैं उनको बड़ा कर दीजिए. So there's a lot of empty space between the text and the image or the video. So visual बढ़ जाएगा and then text in a much more readable format and the timing. So that's a very good first effort, by the way. If you've done it for the very first time ever, then that's a very good. First time. That was a very It good took thing me that you some did. time, but yeah. I just had this idea कि लोग पुराना pyramid use कर रहे हैं, food pyramid. अभी भी grains पे focus है, so it was just, it's a good first type of a thing to share. And okay, so understood. So once now I've downloaded it, I can take it, upload it to Instagram. Exactly. And then put music and also make changes there also. Yeah, you can do certain editings on Instagram as well when you're uploading a particular video. More specifically, when you're uploading a reel, you'll have the options to make edits, add music, add some more text if you want. On reels, there's another good option. Let's suppose while you are speaking or whatever voiceover that you have, it will automatically take up your captions. So yes, in such kind of a video, you probably don't even need to have that text. Instagram itself will help you कि वो video के length के हिसाब से it will create those captions for better understanding. ठीक है. Okay. So I hope everybody by the next time would have their first times of creating videos and creating content and schedule. I would really want to see that, next time जब हम आए तो Instagram channel पर और Facebook पर content बना हुआ दिख जाए. Prayesh, just to review one more, Ritu, my wife has created one video. Didi, can I share that? Should I share what?
Yes, yes, Is yes, that yes. what you shared with me? Should I just share Correct, it? correct. Yeah. Okay. Okay. So this way, hold on. And then maybe now that we're doing this, जो हमने एक दो टेम्पलेट बनाई है उस पे भी, जैसे एक तो आपने देख ही लिया ऑलरेडी, ताकि हम आज के इस हफ्ते में वो फाइनलाइज करके हम कंटेंट बना सकें. I should just be able to play it here. All right. So what I would suggest in this, content सही है, mindset सही है, but सिर्फ visual appeal हमें better करनी है, and rather than using those icons, if we can have pictures, वो visual appeal बेहतर हो जाएगी उसमें, मनोज जी, if that makes sense. Content का mindset सही है. Right. Thank you, Belji. No worries. Cool. यश, All right. मैं एक चीज पूछना चाह रहा था. लाइक जैसे हम बिजनेस मेटा के थ्रू अगर स्टोरीज को शेड्यूल करते हैं तो उसमें हम हैशटैग यूज नहीं कर पाते. राइट. इंस्टेड ऑफ अगर हम डायरेक्टली अगर करे करें तो हैशटैग यूज हो जाते हैं. वो फीचर ही वैसा है, वी कांट रियली हेल्प अबाउट इट. इसीलिए अगर हम वहां से मेटा बिजनेस स्वीट से अगर स्टोरीज अपलोड करें तो अब रेगुलर एक एक वो होता है ना कि आपको एक मशीनरी चलाते रहना है, तब हम वो बल्क के लिए क्रिएटर स्टूडियो वो चलता रहे कि बाय चांस कुछ भी मिस ना हो, बट सर्टेन थिंग्स आपको हमेशा ऐप पे जाके करनी होंगी. तो जो आपका हाईलाइट कंटेंट हो, जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना हो, वो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके अपलोड करें, वहाँ हैशटैग्स यूज करें या वो अभी मैं इंस्टाग्राम एक स्टोरी चीज ऑप्शंस यूज करें. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अभी एक चीज पूछना चाह रहा था. जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट सोचा था बिकॉज वी आर आल्सो रनिंग अ कम्युनिटी. तो उसमें हमने जैसे मंडे टू संडे हमने जैसे टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ हेल्थ हमने एआई इंटीग्रेशन के थ्रू 7 टाइप्स ऑफ हेल्थ और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, तो 4 एक्टिविटीज ऑफ ईच हेल्थ टाइप. तो उसके लिए हमने स्टोरीज बना दी. तो एवरीडे हम लोग मतलब जो है उस पर स्टोरी पोस्ट करते हैं कि एवरीडे एक स्टोरी, और उसको हाईलाइट में डालते जा रहे हैं विद अ ग्रेट आइकॉन बना करके उसको हाईलाइट में ऐड करते जा रहे हैं. तो मींस क्या मतलब ये अपेलेबल है, मतलब काफी मतलब सही है ये चीज या एब्सोल्युटली. मतलब आप अगर स्टोरीज हाइलाइट्स में डाल रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए रील्स की ऑप्शंस भी बन जाती हैं, राइट. तो आप ये जैसे हमने अलग अलग कंटेंट बास्केट्स बनाए हैं ना, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल एक्सरसाइज, रेसिपीज, तो आप इन चीजों को स्टोरीज पे डालेंगे. स्टोरीज पे डाल के रेसिपीज है तो रेसिपीज के हाइलाइट्स में चली गई, एक्सरसाइज टिप्स है तो एक्सरसाइज के हाइलाइट के टिप्स में चली गई. देन एक महीने बाद आप उन्हीं हाइलाइट्स में जाएंगे और वही सेम हाइलाइट्स फिर रील्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो आपका रीपर्पस काफी होता जाएगा. परफेक्ट. थैंक यू. ऑलराइट. Yeah, we have to learn this repurposing after, once we start creating. Yep. Yes, Deepak. Preshi, if actually I was going through some reels and they were, so many videos are coming up now saying that you can use chat GPT for the content, then the same content can be copy paste, then you can create the entire video. अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, but again contradictory some videos are there which are saying that YouTube or other social media platforms will definitely catch you up with that, so try to be much more realistic. So not social media platforms, Google या YouTube definitely करेगा, because उनकी जो एल्गोरिदम है, उनका जो मेन कंटेंट प्रोड्यूस करने का या जांचने का तरीका है, that is different.
अब अगेन ये चीज जरूरी आपको करनी है कि हम पूरा चैट जीपीटी पर रिलाय ना करें। अगर उसने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, उसको अपने ढंग से थोड़ा सा चेंज करके अपना व्यू पॉइंट डाल के हम उसे यूटिलाइज करें कंटेंट को, राइट। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वीडियो करने में आपको भी मजा नहीं आएगा, बिकॉज फिर वो मशीनरी वाला काम हो जाएगा। गूगल पर जब हम आर्टिकल्स डालते हैं या यूट्यूब के लिए जब हम वीडियोस बनाते हैं, वहां पे जो उनके एल्गोरिदम्स हैं वो फोकस करती है ओरिजिनल कंटेंट पर, एब्सोल्युटली ओरिजिनल कंटेंट पर, राइट। वहां पे डुप्लीकेसी में प्रॉब्लम आ जाती है। सोशल मीडिया पे कंटेंट की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। एक कंटेंट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते मैक्सिमम चल जाएगा, उसके बाद दब जाता है। तो जहाँ कंटेंट की शेल्फ लाइफ कम है, वहां पे हमें अपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप यूज करिए चैट जीपीटी का, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली। गूगल और यूट्यूब पे हमारे कंटेंट की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी रहती है। तो वहां पर अगर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एल्गोरिदम हमें डबल नुकसान दिलाती है। ओके। और सर सेकेंडली, जिस सपोज जैसे पॉइंटर्स हमने बना लिए, सो इज देयर एनी वेबसाइट और ऐप जहां पर हम उनको अपार्ट फ्रॉम ल्यूमिन हम बस उसको पेस्ट करें और वो कन्वर्ट कर दे वीडियो में, और वी हैव सॉरी, टू आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट? so once we have created the content like 4-5 points, so apart from Lumen 5, what are the other options we can use for creating that into video? रेंडर फॉरेस्ट, जैसे हमने वो दूसरा देखा था ग्राफिकल व्हाइट बोर्ड के लिए, राइट। और भी है jasper.ai करके है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। पेपर टाइप है, लेकिन वो सब फिर काफी महंगे हो जाते हैं। लूमिन 5 ये है कि सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया जुगाड़ू प्लेटफॉर्म, इन वेरी सरल भाषा। Okay. Okay. Priyash will share one or two other things just so because we need that. Yeah. Go ahead. Rakesh, are you talking about the smoothie video? Okay. So let me share again. Also, Canva पे जो हमने designs बनाए हैं उसका वो एक दो share कर लेते हैं. And then I think our time is. I really like this one जो राकेश जी ने किया था. Wow, this is called healthy drink. Power of red, power of yellow, beetroot, white and green. And some friends, देखो हम लोगों ने सारे फ्रूट्स दिए हैं, जैसे कि हमें डॉक्टर बराज बता रहे हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, तो कई बार नहीं खाए जाते, तो यू कैन ऐड ऑल दिस इनटू ए मिक्सर ग्राइंडर, राइट। देखो उसमें चुकंदर है, संतरा है, सेब है, टमाटर। सो फ्रेंड, जो हम लोग वीडियो देख रहे थे फ्रूट्स की, वो रेडी है। देखो कितना प्यारा कलर आया है। एंड ये मेरे और सीमा का देखो 2 ड्रिंक, ये बड़ा एक स्मूथिंग सा बन जाता है, काइंड ऑफ ए स्मूदी। और यप, जबरदस्त। So that's awesome, right? So this will go into like our feed. I would suggest this should go into your reels. This is a trending kind of a video, yeah. And then once it goes on the reels, upload it onto your story as well, add it to your highlight as a recipe as well. तो ये that was very nice. वो celery थी क्या साथ में? और You did a really good job. Celery and cucumber, yeah. Nice. So ये 38 seconds है. हाँ, so ये जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज वेरी नाइस। अब हम जैसे अगर इसको रील फॉर्मेट पे लाएंगे, व्हाट कैन बी डन इज इसको थोड़ा सा विद ट्रांजिशंस, विद इफेक्ट्स व्हिच यू विल लर्न, धीरे धीरे होगा। यू कांट एम फॉर कि इमीडिएटली हम 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स पे लाएं, राइट। बट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू डन इट, दिस इज वेरी 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 गुड। विद सर्टेन ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो आप सीखेंगे, दिस विल बिकम शॉर्टर इन ड्यूरेशन एंड इवन मोर एंगेजिंग। Right. जैसे हमारा गोल रहेगा कि लोगों को बताए कि हाउ यू कैन ईट 7 fruit in one time. 7 fruit, I think they don't eat even like a week sometime. They don't have time. They have money but don't have time. But they can eat it once. हमारे कटे हुए पड़ जाते हैं, 4 दिन तक बाहर सड़ जाते हैं, किसी को खिलाना पड़ता है। Yes. We are doing same thing every day now. Thank you. Perfect. So let's see this, right? जो हमने ये, this is just all my Canva. ये green background किया था, so I've converted it into a white background. So as you see, I've put the logo. Should it be bigger? Is that okay? That'll pretty much go on
To be very honest, I couldn't notice the logo on that side. I don't know. Yeah, Right. because अभी colors different है, but हाँ, जो मैंने समझा आपसे कि आप कह रहे हो जो ये कंटेंट है, जो फोटो हाँ, कंटेंट है, हाँ, that should be 2/3 yes, and ये होना चाहिए 1/3 1/3, and logo को bring it on the left hand side along with the 2/3 grid. right up front. Yeah. Okay, so this on it Yes, should be and on it could this be a side. little bit larger as well because we have a lot of Okay. white space there, so logo can Right. go big. Yes, Okay. right. So we will adjust I things just like think one more key. This text that we are utilizing here from Happy Tribal, Oh, right? we will, yes. Just consolidate into one or two text formats, which should go across all of your posts. For example, the one that you made on Canva was a different font. This is a different font. Finalize one or two fonts and make use of them. We are. So far, we are going probably with Lancelot. Everyone Okay. has picked that one. But yeah, this was more just to see how it's looking. I think इसमें एक में है Lancelot. I'll show you. Oh, it's not on this one now. Logo, But definitely try and keep it on the left hand side. ठीक है. All right. So we just did two क्योंकि हो सकता है we'll need just the face. When you have the face, then this up and down will work. When you have a full body, then side to side will work. So ऐसा हमने कुछ किया है. ठीक है. इसके colors थोड़े हम देख लेंगे. And again, this photo area that you have can go bigger and larger. Yeah, that we will increase, and the text we can decrease. Right. So I like हम कुछ हो सकता है कि कुछ हमारे ऐसे ग्रीन बैकग्राउंड के हों और कुछ हमारे लाइट ताकि थोड़ी सी कलरफुल रखना. That's fine. As long as your primary colors of the logo and the brand are utilized in some way or the other, keep doing that. With white background. So these are our main colors, the green with the light, to break that green monotony, we have this teal. So ठीक है. Perfect. All right. I think that is it. Then there was one other. So for example, we had picked something like this for our quote. So are you saying this THT should be, but इस पे ठीक लग रहा है? इस पे ठीक लग रहा है because यहाँ पे the background is different color, right? Again, size थोड़ी बढ़ सकती है. And this quotation का font, this is nice. This looks good over here. Just this is the bold. Lancelot. This font. For a quotation, just make it bold font. Yeah, just bold it. ठीक है. All right. Right. So these were the few things. Agar, I'll just stop sharing. Oh, where did my Zoom go? So at least हमें थोड़ा सा direction हो गया है कि किस तरफ जाना है अगर हम content डालना शुरू कर रहे हैं. Right. ठीक है. So there's not as such any kind of task जो specifically for this session हो. It's just previous task का जो भी remaining है. Let's try and squeeze them out so that next week onwards we can move forward, because the other 4 sessions we're primarily going to be focusing on reels. Then we have Facebook groups that you guys would have to be creating. Then we're talking about WhatsApp community management, right? So a couple of things yet to come. Also, last session, as I told ki I would want to be in a position wherein you can yourself check out from your accounts ki what has worked for us and what has not. So looking at the insights and optimizing it. And of course, there's going to be plenty of more questions in the final session as well. So that's the mota plan for the next 4 weeks. Hitachi, So, want to add something? yeah. So, Lavleen ma'am, in order to match up to the pace of our, trainings, and if there is like while you guys will be making and preparing content tomorrow, and making basically refreshing it. So, if there are any doubts or anything that you need consultation on, you can always reach out to me, and I can, basically reach out to then Priyash, and if there is anything that you need guidance on in between the week, also before Wednesday, you can always do that, and so that we can fasten it, and we basically be at pace so that all our KPIs are met before we bring an end to this training. So yeah, understood. Thank you so much. We need your details, contact details, Hitachi. I'm there on that online group. You can always tag me. Yeah. Ascentocus.
No other questions? नहीं दीदी ऐसे मैंने ना आपको एक टेम्पलेट का डिजाइन ना व्हाट्सएप किया है अभी, तो आप एक बार प्रियेश को दिखा दो कि वो मतलब इस टाइप से हम लोग इंस्टाग्राम पे मतलब जो है पोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं टाइप, जस्ट एक रैंडम क्रिएशन है। आपने व्हाट्सएप किया? हाँ जी व्हाट्सएप किया मैंने, एक पीडीएफ फॉर्म में किया है मैंने, बट वो ठीक है। बेसिकली फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है, मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं जिसमें Carousels. हाँ again the thought is great. The only thing जो मुझे mismatched लग रहा है is the vector images that we've used, and again if you look at Envato and if you look at those other platforms आपको काफी और थोड़ी सी आप कह सकते हैं नॉन कार्टूनिश वेक्टर इमेजेस मिल जाएंगी, बट see carousels में that's very good thing that you've done, वो swipe वाला icon आ रहा है, letting the person know कि आगे अभी और content है, आप swipe करो, right? That's good, that's good, that's good. And also, sir, just to add, agar aap content, I think Priyash, correct me if I'm wrong, because I feel that in the first few slides, it's a little verbose. So if they can concise the content, make it a little shorter, that क्योंकि attention span बहुत कम होता है Instagram पे सबका, तो जितना crisp उसको define करोगे आप, उतना people will be able to read it and absorb it, because ज़्यादा paragraphs नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ हाँ, वो हमें अवॉइड ही करना है किसी भी चीज पे। अगर पैराग्राफ जैसा आ रहा है, थिंक अबाउट इट कि इसको मैं 2 लाइन में कैसे कन्वर्ट कर दूं, राइट? परफेक्ट। So short and concise. Yes, या फिर सरल और संक्षिप्त। Less is more. Lavleen, I like that you told last time. Less is more. Yep. Wonderful. कोई और है? So Hitaishi, I'm gonna be looking you up quite a bit then this week, since हमें ये सब finalize करना है, ठीक है? Yes. ठीक है, तो हम आपको करते रहेंगे फिर टैग उस पे। Sure. All right then, everyone. Thank you so much. We'll just be back for 2 minutes just to finalize. Thanks. All right. Thank you. Ma'am, you have the host access, right? I believe I do. It's all good. Yes. All right. Perfect. Cool. Thank All right. you. Bye, Bye, everybody. Thank you, Priyansh. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Priyansh. Live. One दीदी मैं second. एक चीज और शेयर करना चाह रहा था, लाइक जैसे कि हम जो लोगो, जैसे सब लोग, एक क्वेश्चन भी आया था ना पीछे मनोज का कि हम लोग लोगो को कैसे मतलब पुट कर सकते हैं, तो वो उसमें जैसे हम किसी को पीएनजी फाइल बना के भी दे देते हैं ना, तो हम अगर मतलब पेड वर्जन से बना के दे देते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है अपनी टीम में, फ्री में जो मतलब फ्री वर्जन जो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो उस लोगो को पुट करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड आ जाता है, और बैकग्राउंड एडिट करने का ऑप्शन फ्री में नहीं है। But we have ना, हमने दिया हुआ है without background. मैंने जो पहले तो फ्री वर्जन में ही बनाए हैं, वो लगा पा रहे हैं लोग, एक बार पूछ लो, क्योंकि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हम जो अपना मैंने जब पीएनजी फॉर्मेट में दिया लोगों को बैकग्राउंड फ्री करके, तो वो जब पुट कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली वो कट कर जा रहा है, और मतलब क्या कहते हैं, वो लग नहीं रहा कैनवा पे। अब पता नहीं